Okay, we are going live and कभी-कभी थोड़ा सा देरी हो जाता है by the time you start the session. Okay. Right, no problem. Let me pause it so that we can see it. Okay, we are good to start. Thank you so much, Miten, for doing this. Oh no, pleasure is mine. Thank you, Rachna, for inviting me on your show. My pleasure. And let me first introduce you, and then I'll introduce myself, just in case any of your followers or subscribers are watching this podcast. Yes, certainly. Okay. So we have with us this evening Miten Kakaiya, the founder of Miten Says Fitness, helps individuals around the world to achieve their fitness goals. He's an online fitness coach who's breaking diet and workout related stereotypes and is working towards providing MSF members with a better lifestyle. In just a few years, he has helped 8,000 plus men and women become fitter, leaner, more confident, and energetic versions of themselves. Welcome very much, Miten. Thank you for being here. Thank you for such a kind introduction, Rachna. You know what when I checked your Insta, what I liked is it's science based. कि आजकल कुछ भी लोग बेचते हैं without any background, and so I love it that you're actually telling the research behind all these so-called fundamentals which people do not realize, and they just go crazy with how to get fit and they want a quick result with everything. Isn't that like what's the today's generation? No patience. No, I wouldn't say the entire generation is like that. No, of course not entire generation. I mean, quite a few of them who want to like get fit, especially the fat area, the stomach area. Everybody is like, हमको उधर का exercise बोलो, बाकी सब छोड़ दो. But that's the troubled area which most of us as an Indian population do face, right? And if you look historically as well, this has been the issue. I mean, motapa ghatao 25 din mein, or belly fat kam kijiye 4 din mein. These kind of things have been trending since God knows forever, right? So, but then the science is ever evolving. We as human species are also ever evolving, and there's new data coming in on a day-to-day basis, which sometimes is opening the eyes of us as well, who are science-backed researchers and sharers of such educational content. And it is making us realize, okay, what we perceived to be true earlier might not actually be true according to data. So there is an important saying within the community which says data over feelings. Okay. If you feel something is right, does not necessarily mean it is right if there is no data for it. And if the data suggests otherwise, no matter how much you feel against it, you're going to be wrong. So data over feeling is something which one of the persons who I look up to as well for knowledge it's his quote, and I wouldn't steal that. Sorry, who is that person? His name is Dr. Lane Norton. He's a PhD person in the science community, within the fitness community. Okay. And just in case Miten's followers and subscribers don't know who I am Rachna Daryani. I'm a counselor, clinical hypnotherapist, and a soft skills trainer. I generally do free counseling for kids above 15 to 18 because generally they don't talk to their parents, and I play a very important role there, so that they have someone to talk to, someone to guide them. I have my own Discord server with 3,000 people. It's like a virtual support group. Wow. And of course, my Insta and YouTube is there. Anybody, if you're suicidal, if you're clinically depressed or something, I'm not a psychiatrist, please understand. I'm a counselor. I don't take such serious cases. But otherwise, if you're like having general stress issues, school related, college related, family related, or वेरी कॉमनली आजकल की जनरेशन को लव प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, तो मेरे डीएम्स उसी से ज्यादातर भरे होते हैं, या तो पढ़ाई का इशू, पेरेंटल इशू, या रिलेशनशिप इशू. सो आई एम क्वाइट यूज्ड टू इट, एंड इफ एनीवन कैन नॉट अफोर्ड काउंसलिंग, प्लीज feel free to contact me. That's amazing. I'm so glad. I'm so happy to hear the good service that you're doing for the community, especially for kids. It is one of the crucial years where the stories that we are told and the things that we absorb shape us as an individual and shape our perspective towards a lot of things in life as well. So it's really interesting that you're catering to this population and leading them on the right path.
Right. Thank you so much, Miten, for your kind words. So, चलो Miten, ये बताओ, सब लोग चाहते, मैंने तुम्हारा जो पोस्टर लगाया है उसमें वो जो ऐसी बॉडी बनाई है, like people are crazy about such bodies. So, आपको ऐसा कोई करता है कि जैसे जॉन अब्राहम और सलमान को बोलते हैं शर्ट निकालो, तो आपके साथ कभी ऐसा होता है कि हमको आपके 6 पैक एब्स दिखाओ? Whenever any woman finds out in a social scenario, that's when I get it. But apart from that, no, not really. I mean, I'm not a star. So I'm glad that I have not reached that stage yet. But amongst my social scenario and my friends and all, I mean, they never hesitate to, like pull my leg, hey, tu to tere paas to abs hai, like if you're going for a pool party and, the guys are hesitating to enter the pool, they all come up to me and be like, "तू क्यों wait कर रहा है? तू जाना, हम लोग तो wait कर रहे हैं, हमारे पास तो body भी नहीं है," like. But yeah, that's just the friendly banter which happens amongst the friends. Apart from that, no, nothing great. Like, Okay. So how did your fitness journey start? How did you get into this? So were you also, did you start off like not very comfortable with your body and then fast forward you're here? yes, How did you come absolutely, to? absolutely, like a very stereotypical fitness person's journey. But still some light on it. I used to have a 38 waist, back in the day when I was in school. Acha, 30, in school? Wow. Yes, Acha. and like obviously, getting bullied for being out of shape. And I used to look in the mirror and I used to always wonder that such huge love handles which I used to have, Yeah. it would be a miracle if they go away. So obviously I tried gymming and tried to stay consistent with gymming as well, but a lot of failed attempts, a lot of overdoing of cardio, a lot of basically there was lack of structure and lack of path and the lack of science in my life. And then later, like towards the end of my college, towards my end of my undergraduate degree, is when I discovered the science behind nutrition. And when I started applying that science behind my nutrition is when I started seeing results within the first month itself. So what I couldn't achieve for almost like 6, 7, 8 years was done within 1 month of eating the right quality and the quantity of food. Acha. Wow. So, and I was like, wow, this is like magic, the miracle which I thought in my childhood is actually becoming a reality. And because it was so easy to get rid of those love handles and then slowly add gymming to it as well and get into a better shape in life, it motivated me so much that I never stopped eating good food. And then when I was eating good food, I was eating my portion controlled calculated meals. I started learning more and more along the way as well. So my formal education has been in aerospace engineering. So Oh, I've done, really? yes, Okay. I've done a master's degree in aerospace engineering from University of Manchester. I was in fact even working with Airbus for a year, but then I realized this is not my calling, and I came back to India, and I was roaming around one of the malls in Bombay, and I saw people walking around, not having good shape, having lack of energy, having being out of shape, which made me realize, like these people are also just like me, like I used to be over there. And technically speaking, like I told you, if you apply the right science in your life and behind your nutrition, especially, then you can easily get rid of a lot of your woes in life. The shape aspect is just the vanity aspect of it, but it's the benefits that count, feeling more confident, feeling more energetic, keeping those chronic diseases at bay. These are the true values that you get to enjoy apart from the physical outlook that you are able to showcase to the world. So it just happened to be that my sister was getting married and a couple of my cousins were like, hey, can you help us? We want to get in shape for your sister's wedding. I'm like, yeah, sure, why not? And that's when I started preparing a nutrition program for them, a workout program for them. And I told them, hey, why don't you try this out since I'm doing it for the first time? Try this out. Let's see how the next 7, 10 days go. Then I will collect your feedback and I'll make modifications to it. So when the first 7, 10 days went by and I had to collect the feedback and switch on my laptop to update their programs, it didn't feel like I was sitting down to work. Okay. So that made me realize, okay, no, this is, what I actually might be truly passionate about. If it doesn't feel like work, then I think I can do this for the rest of my life. So, my journey began as
a coach, and I started learning more. I started helping other people around me, getting more and more experience in terms of different variety of clients, their journeys. Because though the science is very simple, the equations are very simple, each individual's mindset is different. Each individual's way their body performs internally is also very different. So you need that kind of variety and exposure to learn more along the way. And slowly and gradually, I made it as a brand, MSF, Miten Says Fitness. And just in a couple of years, we also launched our own mobile app now. So the service that we provide in terms of nutrition programs and workout programs, which are 100% custom made for each of our customers' life, their journeys, their lifestyle, their routine, their schedule, their dislikes, their preferences, you name it, the availability of groceries in the area. A lot of customization goes behind the how much time commitment they can give, how much budget do they have. All of these factors are taken into consideration before we prepare a customized nutrition and workout program for them. And then we share that with via our members only mobile app. So the what do you call, consumption of the program becomes easy and seamless for our members. Okay. Yeah, that's how the journey started, and this is the stage at which we are at right now. And I would say I've been grateful to each and every member that we've had at MSF so far, for showing their faith in our program and believing in us and trusting the process. And as a result of that, they've been able to experience the benefits that come along with it. Okay. So that you would say this is your USP, having an app. I even saw today your story where you even give recipes of Yes. how to cook it. Wow. Yes, that's right. So a lot of these dietitians or nutritionists, if you go to them, they'll tell you, अच्छा सुबह उठ के एक एप्पल ले लो, दोपहर को पनीर खा लो, रात को अंडा खा लो. But more often than not, because the client will be confused after a point that, okay, ठीक है, पनीर के साथ क्या खाओ, they'll get bored as well. ऐसा plain पनीर कौन खाएगा रोज, And not everyone is a cook, right? And not everyone has that support system at home who can be creative with that paneer and tell them different ways to eat it in. So what we did is we started providing recipes alongside with it. So we don't tell you कि जाके पनीर खाओ. We'll go and tell you कि जाके पालक पनीर खाओ. अच्छा. We won't tell you तो कि पनीर नहीं खाती, problem वो है. So paneer is just an example. And if you don't like paneer, if you don't want to eat paneer, that's the other USP that we have, is that we customize it as per your dislikes. Okay. If you don't like certain things, I can hardly recall me telling any of our members that, no, you have to eat this if you want to reach your goals. If you don't like it, then obviously I would love to give you an alternative or a variety to it. Because the most important aspect with regards to achieving your fitness goals is to stay consistent and stick with your program. And if I ask you to do something which you don't like, then obviously you're going to fall off track. You're going to be like going away from following the program. And if you don't follow the program, you are not going to achieve your results, which becomes a failure for me. I actually consider that as a failure. And hence, we try to find out ways in which we can understand each individual's requirements. So recipes is one very good aspect. And the level of customization that we do is the biggest USP that we have. So, and because we have presence in like more than 40 countries across the world, different customers have different availability of groceries in different areas of the world. So even that thing we take into consideration. Forget different areas of the world. Even if you look at India, for that matter, India is so vast, right? North, south, east, west, middle India, central India as well. And the cuisines are different. The availability of groceries are different. The food items that you get in the shops are different. There are metro cities, there are tier 1 cities, there are tier 2 cities. So every different area has different availability of groceries, and we literally take that fact also into consideration when we are preparing a nutrition program for our customers. But मेरे पास जब ये बच्चे आते हैं, let's say कि 25 plus, तो they can afford the price that you're asking them. But what happens is
most of them are looking for good fitness coaches, but they cannot afford the price. So what do you do? Do you take such clientele, or what is your clientele? Is it starts from mid to high, or they can take little थोड़ा जो No, सस्ते में चाहिए जिनको? no, so our prices are not negotiable, which is given on अच्छा. the website. Purely because fitness is one of the things where people, it's not like, I use this as an example, it's not like, say, for example, an XYZ brand's t-shirt, where you go to the store, you swipe your credit card, you purchase a t-shirt, you wear it, you enjoy it. It's not like that, right? Here, you have to come to our store, you purchase, you swipe your card, you purchase the program, but then you have to put in the effort in order to enjoy the benefits of it. And what we have found over the last few years is that when there is more monetary value attached to it, the seriousness increases from the customer side. Right. So obviously we've had cases along our learning journey as well, where people who have been genuinely unable to afford the fees or whatever reason it might be, we try to helping them out, but the adherence factor then goes down the drain simply because they don't value the service as much. And fitness is one of those fields कि अगर free में कुछ आता है तो लोग करते नहीं है. And hence, like we've decided, and also apart from that, like, see, at the end of the day, it's a team's effort, right? It's not me alone who's running the show. It's an entire team in an army of people, which is looking after every single aspect of the business, and which does eventually lead up to the whole coaching side of it and the experience that our customers are facing. So it doesn't justify the efforts of the team members and the time and resources that they spend and the efforts that they put in if they don't get rewarded for it. So that's the couple of reasons I would give with regards to justifying the prices that are given on the website. And in fact, if you look at it, like with the different coaches which are there on Instagram nowadays, on social media, not Instagram, sorry. The prices that we are giving is like actually one of the lesser ranged products, services that we are providing in terms of the price. And also, if you compare it to, say, going for a dietitian and then going for a personal trainer, two separate entities altogether, your price, and plus you have to pay for the gym on top of that for the personal trainer. The overall cost that you would bear is like probably 3 or 4 times the prices that we charge. And here you get the advantage of having everything under one roof. So that, and also the fact that it's not just about paying the money to 2 different entities, but also coordinating between 2 different entities. Here, everything is under one roof. You have one point of contact who is going to take care of your nutrition requirements and your workout requirements. Right. True. So how long have you been in this business? We completed 5 years back in the month of April. Okay. And yeah, I mean, this app, the app that we launched was launched just last year in February 2021. And since then, obviously, we've been improving the app, launching out new services, adding more variety of recipes and meal combos. We have 6,000 plus meal combos when I last checked with the team, available to give to our customers. And 6,000 what? Sorry, what was it? 6,000 plus meal combos. Oh, wow. Okay. So, Yes. मतलब bore ना हो इंसान पूरे महीना. Correct. That's the whole point behind it. And if you look at the customer testimonials that we get on Google, if you look at the reviews that we have on Google or the emails that we receive on a day-to-day basis, they always talk about how amazing the diet is. And they never thought that the diet can be like this as well. And hence, when you introduced me, and if you look at my Instagram bio as well, we are changing the perception of fitness. Fitness does not equal to struggling, and diet does not equal to boring. Yeah, you don't need to starve to death. You don't need to starve to death. You don't need to eat boring or bland food or curse yourself for starting this journey. It can be an enjoyable journey rather than a suffer train. Okay. What do you suggest for, like, do you take only a specific age, or anybody can contact you? Women, men, any age, or is it like a... Yes, so this is something that we are still working on to find one particular niche that we would want to restrict ourselves to. But as of now, we've had clients as young as 13 years old.
Yes, there's this one lady who's currently in 13 years old, and we've had clients who are as old as 65 years old as well. Does And genetics also play a role? You in the beginning you said कि Indians का ये problem है, तो do you think as Indians हम heavy on the hips होते हैं या heavy on the stomach होते हैं, ऐसा कुछ? Does it matter really? yes, I mean, genetics does play a small role, but it basically will determine how easy or tough it is going to be for you as an individual to get into shape. Number one, if you have strong genetics, you can lose fat really quickly. If you don't have those kind of genetics, then it'll take you a while to, lose that fat. Genetics will also determine the shape of your physique. I mean, if you compare, say, for example, for the lack of example, if you look at Tiger Shroff and if you look at John Abraham, they both are fit, they both have six-pack abs, but they both have different physiques, right? That's because they're genetically, their bodies have been built that way. So that's where genetics would come into picture. But I wouldn't give so much importance to it because the entire industry is already giving so much importance to it that a lot of people are being swayed that, oh, I have bad genetics and hence I cannot become a fit, and using it as an excuse to, remain unhealthy, to remain unfit. So that's why I don't really focus so much on genetics. And in fact, like I said, it only limits you in terms of the pace of the progress and the physique that you're going to develop. Okay. That's very interesting because I feel that especially India में वो तो खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो अलग बात है, हर नुक्कड़ पे समोसा बिकता है, and it's kachori and samosa is like their thing to eat even in the evening, so it's so difficult for Indians to gather the concept of healthy eating. Do you believe in cheat meals, or you're like, I understand you said that your recipes are well programmed, you don't get bored and stuff like that, but are cheat meals okay? And how often? Yes, absolutely. They are a very important aspect of our nutrition program as well. And in fact, we encourage our customers or clients to have at least one cheat day per week. I wouldn't say cheat meal. I would ask them to go and enjoy the entire day of, because psychologically it helps. If you look at it, sorry, is my network correct? Yeah. Okay, perfect. So what I was saying is that psychologically it helps a lot, right? When you start a diet journey, you are so motivated in the beginning and you follow it for 4 days in a row, 5 days in a row, 6 days in a row, 10 days in a row, 20 days in a row without taking a break. But then there will come a point where you will be like, oh, I've been on the diet for so long, let me just go and grab one cookie. And then next day you go to the office, someone's birthday is there, they've got cake over there, and you'll be like, oh, it's been so long, I haven't had the cake, let me go and have that cake. And then you continuously fall into that cycle that every day you slip out and you happen to have something. But when you have a dedicated cheat day in place, which is planned from before, no matter how much temptations come in, you can convince yourself that, hey, you know what, I am on a dedicated journey. This is still my 4th day. I still have 2 more days to go. On my 7th day, I have my cheat day. So I'm going to tell myself, not today. 2 days later, I have my cheat day. That's when I'm going to go and satisfy this particular craving. So it gives that sense of security that, I have a particular day coming up in just a few days' time where I can go and have my favorite meals. Whereas compared to if you're not having the leeway of having a cheat day or a cheat meal, then your chances of slipping binging increases, and that cycle continues. And then eventually you never know, you'll just fall off the track. So psychologically, it helps a lot to have these kind of breaks in between. And obviously scientifically also it has some kind of an advantage in terms of restoring a leptin and ghrelin hormone levels, which is leptin and ghrelin hormone levels, which are basically your hormones which signal your body how hungry you are, and how satiated you feel. And hence, once we restore those hormone levels, then you can again power through the week on a low calorie diet, for example. So 2 advantages, one is psychologically and second is scientifically as well, like I said. पर मेरे जैसा अगर से आपके पास कोई client आए तो just you said कि I'll give you one cheat day, right? Yes. Cheat, not even a cheat meal, a cheat day. तो मैं तुम्हें बोलूंगी अच्छा 3 meals तो वैसे allow कर रहे, तो let me spread it throughout the week and let's have like a cheat meal
3 times a week, like that. So is that Yes. allowed? Is that like a thing that one can do? Yes, definitely that is an option as well. But I would still promote a cheat day rather than a three different cheat meals spread through the week. This is primarily because if you look at the science, right, you're supposed to be consuming certain amount of calories in a day and certain amount of calories in a week. Now, when you allocate one particular day to a cheat day, after following a diet which is making you eat high volume, low calorie foods, I'm talking in terms of weight loss, for example. Um, you will realize that there comes a point after which you can't eat any more food. So when you have an entire cheat day, right, and you go and binge, you will not be able to binge to such an extent that you will overshoot your total calorie intake for the day so drastically. Whereas if you have three different cheat meals spread through the week, you've eaten as per your diet, and now in your final meal of the day, you're left with say 400 calories, 500 calories for the day in your allowance, and your cheat meal happens to be say 1000 calories, and then you have three such meals, so you're going over by 500 calories in each of those meals. Whereas if it's all confined to a single day, your chances of overshooting that calorie expenditure, calorie budgets for the day is less. Plus we also send out certain guidelines along with those cheat days that okay, we educate our audience, our customers, in terms of the importance of the cheat day and what are the few things that you must keep in mind while enjoying your cheat day, not in terms of the variety of food that you eat, but in terms of the quantity of food that you eat. So variety wise, you're allowed to eat whatever you like. You can have a dessert also, you can have a cake, you can have an ice cream, you can have fried stuff as well if you like. But quantity wise, you got to be mindful about the total quantity of food that you end up consuming on your cheat day, because you don't want to overturn the progress or the hard work that you've put in over the previous week. Right, makes sense. अच्छा, थोड़ा ज्ञान हमें चाहिए प्रोटीन पाउडर्स एंड प्रोटीन सप्लीमेंट्स एंड वो जो डब्बे आते हैं, वो Yes. पता नहीं कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, पर मैंने रिसेंटली कहीं पढ़ा था कि वे प्रोटीन इज द बेस्ट. कैन यू टेल अस व्हाट प्रोटीन टू टेक? Is there like for a certain, like men take separate, women take separate? Are there age restrictions to certain things? What is the best protein and how much does one need to consume in case most of them are vegetarian? Of course I'm not, but still I've been like, my daughter says take protein. I'm like, kaun sa protein lena, bhagwan hi jane. So give us some guidance and perspective. What is one supposed to do? Right. So the thing about whey protein is that it helps you reach your protein intake requirements of the day. And it's not just with whey protein, any kind of protein supplements. There are plant protein supplements, there's whey protein supplements as well, right? If you go abroad, there is, I can't recall, but anyway. So there is protein supplements which comes in form of whey and plant. Now, the only job of these protein supplements is to make sure that you reach your protein intake for the day. Okay. Protein as a macronutrient जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है. Your food is your any kind of food मेरे को has बहुत protein. साल हो गए स्कूल कॉलेज गए हुए, ठीक है, ऑलमोस्ट Yes. मैं भूल गई कितने साल, 30 साल तो हो ही गए तो Right. So little refresher over there. Okay, your food has protein, carbohydrates, and fats. Every single food item that you consume, and those protein, carbohydrates, and fats make up for the calories in a particular food. Those calories is what that is giving the energy to your body, to each and every cell inside your body. Right. Now, your body needs a certain amount of protein as a macronutrient through the course of the day. Now, you can get that through whole foods as well, in terms of your lean meats, eggs, fishes, dairy products, lentils, vegetables, certain vegetables as well. But more often than not, you could potentially fall short of your protein intake requirement for the day. So every individual has different protein intake requirements. So the day, depending according to your weight, how much it's according it's not according to your total weight, it's according to your lean body mass. Your lean body mass is basically your total weight minus your body fat percentage. So if, say, for example, your lean body weight is 200 sorry, your total weight is 200 pounds as an individual, and you have 20% body fat, you take away 20% from 200 pounds, that is 40 pounds out of 200, you're left with 160 pounds. So your lean body weight is 160 pounds. Okay. So on an average, you would need about 1 gram of protein per pound of your lean body weight. So for this particular example that I took, you would need about 160 grams of
protein as a macronutrient, not whey protein. 160 grams of protein as a macronutrient. Okay, this is more or less an average value. It might depend case to case, depending on your activity levels as well, depending on the amount of muscle mass that you have, and depending on the kind of goal that you want to achieve, whether you want to lose fat, whether you want to build muscle. But one being in the middle, an average value, and for the sake of simplicity, is what I'm using over here. 160 grams of protein is what you need. Now, say, for example, you happen to have breakfast as eggs, your lunch as paneer, and your dinner as chicken. Okay, very random examples. This is not a real diet, unsustainable diet, I would say as well. These are the only three things that you've eaten through the course of the day. Now, after eating these three things, you have probably consumed about 120 grams of protein through this food that you have eaten through the day. You're still falling short of 40 grams of protein, correct? So to bridge that gap is where protein supplements come in. Hence the name supplement. Okay. Got it. So it's supposed to supplement your diet, the amount of food that you're eating, and you supplement that with a protein supplement, and that will help you reach your protein intake requirements of the day. It's an easy form to do it. I mean, technically speaking, you can go and have, say, 6 to 7 egg whites, and you can balance it out with the macros in a protein scoop, or you can have 100 grams of chicken breast measured raw, and you can again balance it out with 1 scoop of protein shake. But the convenience that you get with whey protein is that you just take that powder, put it into a shaker with water, shake it and drink it. So within you can literally within 15 seconds, you can consume that equivalent of 6 egg whites or equivalent of 100 grams of chicken breast within 15 seconds for that matter. And you don't have to sit and chew and get tired of eating all of that food. So convenience is one aspect. Supplementing and reaching your protein intake for the day is one aspect. And while we're on that topic as well, also one other important aspect is that whey, which is a form of a protein supplement, is one of the most fastest absorbing protein sources that we have produced as mankind. So hence you would see these gym goers pack on a lot of protein supplements, especially after workouts, because you want to absorb protein into your body as quickly as possible, closer to your workouts. Okay. So then you're saying whey is one of the best, right? Yes. Or no? Okay. Yes, absolutely. But obviously, in whey also there are different forms. There is concentrate and isolate. The only difference between the two is that isolate is being lactose free. A lot of us tend to be lactose intolerant. We don't realize it because our symptoms are very subsided, but we don't realize it. Hence, I would suggest getting for isolate. Concentrate does help you add more flavors to your protein supplements. Apart from whey, there is plant supplements as well, and in plants also you can get protein extracted from your pea, from brown rice, from quinoa, and you get a blend as well, which extracts it from all different sources and blends it all together to create the profile of the protein. Okay. So there are multiple variety of supplements available in the market. There is also collagen supplement, which does have certain amount of protein in it, but I'm not entirely sure. I've not yet looked into it with so much detail. But yes, if you are still confused as an audience, if you are watching this video and if you're still confused in terms of what to do, what to take, do your own research. Understand and try it out. Okay, try it out which one is suiting your body better. Sometimes people do end up getting stomach issues with dairy products, so even if you're taking whey isolate, people still end up getting some kind of stomach issue. Then in those cases, a plant protein becomes your friend over there. So do your research, try it out, experiment your body and see what is working best for you. And if you don't want to end up experimenting and risking anything, then please contact a good coach who can help you out. When you are ill, instead of Googling the symptoms and medicines, you go to a doctor, right? So similar things can also needs to be applied with regards to your fitness. When you're working on your fitness journey, and if you're not sure what you need to be doing, go consult an expert, because they will save you years of trial and error, falling down the wrong path, and assist you in starting to enjoy your fitness journey, and help you reach the goal that you have desired probably since childhood. Childhood, right? Mostly आजकल बच्चे जल्दी स्टार्ट करते हैं. हम लोग के जमाने में ये सब नहीं था.
we were okay in whatever way. Abhi sabko competition mein utarta hai, especially the Insta world. Everybody wants to, they don't see how much work goes behind that. Actually, a question I had, when you were saying whey and plant protein, are you saying whey is not from, it's not like for vegetarians? No, Or it's from dairy. So it is for vegetarians. It's not for vegans. acha, acha, it's not for vegans. Okay, because I Yes. didn't know where it comes from. So Yes. No. So it comes. So whey protein is very simple. I mean, it's a very natural product. Again, a lot of people say, "Oh, I don't want to take whey protein because I want to stay natural." But do you know what is whey protein? Whey protein is basically जो पनीर बनता है ना आपका दूध हाँ फाड़ के, उसका वो अच्छा वो वे अच्छा आई डिडंट नो दैट जो वो जो पानी पानी निकलता बच है जो जो हाँ पानी निकलता है उसमें से हाँ वे को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको डिहाइड्रेट करते हैं और उसका पाउडर बनता है और उसके अंदर फिर फ्लेवरिंग्स जाती है, एंड देन दैट्स हाउ दे सेंड इट एंड पैक इट एंड सेंड इट टू योर हाउस. अच्छा अच्छा आई न्यू द वे बिकॉज जब पनीर बनाते हो पानी का मालूम है उसका नाम पर आई नेवर पुट इट टुगेदर दैट No, that's एक्चुअली it's कम्स the फ्रॉम same way. It's the same way. So a lot of people have this misconception that whey protein is not natural, and whenever I come दैट across such questions, I always make it a point to educate the customer, to make them understand that number one, whey protein is natural. Number two, whey protein does not have any side effects. Number three, whey protein is 1,000 times safer than all the packaged foods राइट and chocolates that you've been eating since childhood. हाँ There is nobody over here, very few people there might be, where since childhood we've resorted to junk food which comes in packages, राइट package khol ke kha liya, yeah, those chocolates that we've been eating. You never said no to those. राइट Then why are you saying no to whey protein, which is going to be 1,000 times beneficial to your body? true true okay that's great thank you so much for clarifying that actually I have some questions on YouTube. So Yes, please. Let's. somebody is asked, Rachna ma'am, please means to tell you that could you give some advice on necessity of supplements for women? Do you know anything about it or So if I've understood the question which talks about necessity of supplements for women, women? if I want, there are two ways to understand this particular question. If you can clarify, then that will be great. But Hmm. otherwise, what I can tell you is that um, women might have a different list of supplementation needs for your body because your hormones are different. Your the way your body functions to men is different. But for general supplements, you don't need a specialty women version of it. So your multivitamins, your creatine, your whey protein, and the common ones that you see, your fish oil, your vitamin D, vitamin B12, magnesium, calcium, zinc, all of that, they are going to be the same for men and women. Depending on the hormone imbalance which you might have in your body, then you might need a separate profile of supplementation for women specifically. Okay. Yeah. And if I know a little bit because it's only earlier you don't need so much, but after 45, the calcium, the iron, all that plays a role. And if you're having menopausal symptoms, there is a different supplement for it. So there are like certain vitamins and nutrients in one pill. So that is very important and it helps reduce your hot flashes. Otherwise, you can, I don't know who you're asking this question for, but फ्लैक्सीड रोज एक चम्मच खाओगे तो आपके हॉट फ्लैशेस बेटर होंगे एंड आजकल मोरिंगा लीव्स हाँ व्हाट्स योर टेक ऑन दिस मोरिंगा लीव थिंग व्हिच इज कंसिडर्ड सुपर फूड जो ड्रमस्टिक के जो पत्ते होते हैं उसको मोरिंगा बोलते हैं ड्रमस्टिक पता है वो लंबी सी Yes, yes, yes. तो उसका आजकल सब लोग बोलते हैं दैट इज लाइक सुपर फूड हैव यू हर्ड ऑफ इट I don't think you I've should come look it up across. okay I that's shall like definitely. considered the now the new superfood for anything and everything बोलते मोरिंगा लीव्स का या तो So see, that's the little misconception as well. Again, like how you said, okay, rose flaxseed ka ek chammach le lo and you won't have hot flushes. That is assuming that the person has hot flushes, and secondly, assuming that the person won't have any adverse reactions to flaxseed as well. of course. I So meant so like again, that. I'm so saying again, over 50. so again, like a superfood, whichever is being labeled. Earlier, kale used to be labeled. Blueberries are also being labeled and stuff like that, right? I mean, it's not like one pill is going to solve all your woes. It's just that these are nutritious things that you must look at including into your diet, because it's going to provide your body with the nutrition that it needs to function optimally internally.
because everything that you see on the external side is a reflection of how your body is functioning internally. So these so-called superfoods are basically helping you achieve that. But once again, this is something new which I've been studying as well recently, called functional health and functional medicine. So I won't go much into the details of it, but one thing that I would like to point out from my coach is that his line, which says, one man's food can be another man's poison. Of course, yeah. So hence, we cannot just blanketly say, "Oh, jaake ye le lo." Yeah. You would want to understand what's happening inside your body, which we can assess and understand through your blood work. So that's a What are different. those blood group diets? Are they really No, something? blood group diets is a scam. Blood work is basically looking at your bloods from a functional perspective. Just to give you a slight introduction into it, we won't go much into a detail of it because I'm still learning about it, so I don't want to make any claims over here. But just an understanding that when you get your blood test done, all your liver profile, kidney profile, B12, D3, cholesterol, complete blood counts, WBCs, all of that. When you get those blood tests done, you get a report in which you get the conventional range that, okay, this particular blood marker needs to be between this range, right? But that's the conventional range. And what it tells you is that these values are the extreme ends of where your blood marker should be. And if you go beyond it is when you have chances of being ill or having some kind of a disease. Right. But if you look at the functional side of it, this range is much smaller, which basically means, when I say functional side of it, it means that for you as an individual, as a human being, to perform optimally, to perform internally really well, and to have its, like I said, anything happening inside is going to have an external reaction as well. So for you to perform optimally, even externally, in terms of your mood, your job, your social life, your family life, all of that, right? So everything internally that is happening inside your body is going to affect all of that down the line, right? So when your functional range is small, you have to we reduce the functional range to be small so that we can find the most optimal ways of living. Now again, it's not like aapka vitamin B12 has to be between this functional range, that means you're good. Or if your vitamin B12 is outside the functional range, it's on the higher side, it means it is bad. It is just showing you that your B12 is slightly out of your functional range. But in order to read it, you need to make sure that you compare it with all your other blood markers that you're getting done and see its relation with the other markers, whether they are inside the functional range, outside the functional range. If outside the functional range, are they below the functional range, above the functional range, and the interaction that these out of range blood markers have with each other helps us as health coaches to determine the problems that you might be having inside your body, and hence it helps us determine the right protocol in terms of nutrition, in terms of herbal teas, in terms of aromatherapy, in terms of herbs and spices, in terms of your mindset, in terms of your lifestyle. But this is just a very vast topic, which obviously cannot be justified in today's call. And like I said, I'm still learning about it, so I wouldn't go much more details into it. When you learn a little bit more, then you can come back for another podcast. Yes, certainly I would love to. That will be nice. Okay, there's another question there. Vicky says, gym trainer says without protein supplements, bina protein intake nahi hoga, neither you will be building muscles. Is that true? So again, like I said, in order to build muscles, you need a certain protein as a macronutrient through the course of the day, which I explained. If you're a 160-pound lean body weight individual, you need 160 pounds or 160 grams of protein in a day, which can come from food. If you think you can achieve that from your food, you don't need the whey protein supplement. Okay. If you are falling short of achieving that 160 grams of protein, then your whey protein supplements come into picture to bridge that gap that you're falling short of. So remember, the name says it's a supplement. It's not a replacement. It's not a mandatory thing. Otherwise, the name would have been protein mandatory, protein. What is the first word that I used? Compulsory or something like that. But it's a supplement, which means it's supposed to be coming on top of your food. नहीं, but is it true कि उससे भूख नहीं लगती?
क्योंकि जनरली सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की वेट लॉस में यही है कि हमें भूख लगती है. हमने अदर एनी प्रोडक्ट्स दैट देन कैन बाय, जैसे एटलीस्ट थोड़ा तुम्हारा एपेटाइट सप्रेसेंट हो, मेटाबॉलिज्म रेट बड़ा हो, बट इट इज साइंटिफिकली अप्रूव्ड. क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम एक्सरसाइज करते हैं पर हमको भूख कितनी लगती है, तो उस भूख को कैसे कंट्रोल किया जाए. और what do you suggest? Is there something in the market which people can buy and like at least suppress? नहीं तो हर टाइम खाना देख के भूख लगती है तो खाना खाना तो, and I'm such a foodie, मेरे सामने सिर्फ खाना रखने की देरी है and I will eat. So that is one of my main problems, that I can't control my appetite. Yes, so there are three parts to this question again. Like, I'm sorry, am I boring? Yeah, I No, hope I'm not boring I am everyone with. enjoying it. I don't care दूसरों को क्या होता है. जब मैं गेस्ट के साथ बात करती हूँ, मैं बहुत मुझे अच्छा लगता है. I also get to learn a lot and I'm a learner. So please go ahead. Yeah. Right. So there are three parts to this question. First one being that yes, there are pills which are which have a chemical formula which helps you suppress your appetite, but those are usually used in extreme cases of obesity. Okay. Let's not go there. But for regular people like you and I, there are two ways you can handle it. Number one is we got to understand that we end up feeling hungry because the commercially available food which we end up consuming on a day-to-day basis, like you said, those samosas, kachoris, and all of that jazz as well, they are low in volume but high in calories. Right. So when you look at your stomach, right, your stomach is like a bag, correct? Now, if you put in that one samosa inside, it is only occupying one small corner of that bag and the rest of the bag is empty. Okay, this is very simple way, layman way to put it forward, right? Now, because that rest of the bag is empty, you feel more hungry and hence you end up eating more and more food, but you don't realize that वो एक समोसा के अंदर 400 calories हो सकता है, 500 calories हो सकता है, and you have three samosas, you're boom, 1500 calories gone in one sitting, and hence you end up eating weight, gaining weight. So that's where you need to alter your food choices slightly and choose high volume, low calorie items. Chawal? High volume, low calorie items. Chawal, you could argue, I mean, 100 grams of chawal, I end up having about 350 to 370 calories, depending on the make of it and the brands that you get it from. But yeah, chawal can be argued as well. So again, if you look at 100 grams, this is like raw weight. But yes, like Nashikar over here has said, salads there. There's something called as konjac noodles, which is not very widely available in India right now. But 100 grams has only 11 calories. Your salads will get. What is this? What is it called? Konjac, konjac noodles. Oh. You might find it in Indonesia. You may want to check it out. KON? JAC. JAC konjac. Yes. अच्छा हाँ, राइस भी है. अच्छा अच्छा, हाँ है, हमारे इधर मिलता है. Yes. Kumi brass. Acha, it's a type of a rice. Right. Sharatake rice. Okay, got it. So that's like 100 grams के अंदर सिर्फ 11 calories होता है. Then your fruits, high volume, low calorie fruits like. अच्छा नहीं होगा. हमारा नहीं, try करो ना. Try करो फिर पता चलेगा. Anyway, that's not the only solution. I mean, when I say like you're supposed to eat high volume, low calorie foods, like how Nashikar has pointed out, salads become your go-to option. Even your whole lentils and pulses become your option. Smoothies definitely go over there, Nashikar, as well, because your smoothies are again made out of fruits. And fruits may also, then you can be a little smart about it and go with high volume, low calorie fruits, anything like your watermelon, pineapples, cherries, berries, all of those jazz. You end up eating so much, but you're not consuming so many calories through the day. And hence you can control your appetite. You can satisfy your hunger over there through that reason. And third is your protein is supposed to be making you filling, but no, wait, I won't say that again, because recently I came across studies which have been done that protein is not as satiating as it was earlier supposed to be or believed to be. A lot of people say that protein is satiating, but again, I think it has to do with the nocebo effect over here. But there's a lot of studies which have been done recently. See, this is what I meant, right? Like we as scientific people as well, we are coming across with new data, new research every day, which is sometimes contradicting what we was earlier perceived to be correct. So
this protein is one of the biggest data over feelings example, I would say. You feel that you are more satiated with protein intake for the day, but this is just because you've been fed with that particular concept since a long period of time, and hence your mind convinces your body, okay, protein khaya, main full hai. But according to data, it's not true. And another one that I would like to brush over again, as since we are on this topic, is those two hormones which I said, the leptin and ghrelin hormone levels. They are your appetite controlling hormones. Okay. And if they, when you are in a, when you eat less amount of food, or when your stomach is empty, these hormones get released by your brain, which signals your body to eat food and makes you feel hungry. So once we optimally manipulate these hormone levels with the help of diet breaks, refeed days, or cheat days, whatever different methods are available over there, then you can again make sure that you are staying full through the course of the week. So again, and one more thing that I would like to add to that, once again, sorry, I can go on and on, because there's no one solution, right? It has to, that hunger can be coming from any multiple aspects, either from one particular aspect or a combination of multiple aspects. So your hunger could also be coming from the fact that you're not consuming enough food. It's as simple as that. Calorie deficit is the way to lose weight. Calorie deficit is simple thermodynamics of formula: energy in versus energy out. And if there's a negative balance, you end up utilizing the stored energy and you end up using the weight. Now, because of the onset of social media and the fact that calorie deficit is so easy, okay, come khana hai, like it's as simple as that. A lot of people are promoting it, and then a lot of people get swayed by it and end up implementing it in the wrong fashion, either in terms of under consuming the calories that you need for the day, or consuming adequate amount of calories that you need for a calorie deficit as well, but not nourishing your body well. So again, this is what I said, that like when you are embarking on your fitness journey or your health journey, it is very crucial to consult an expert, get yourself a health coach or a fitness coach who will make sure that you are not just achieving your goals, not just enjoying towards achieving those goals, but you're also ensuring your long-term sustainability and safety of your body as well. Thank you. Gaurav, you have a question? You want to text it or puchna? You can unmute yourself. Yes. So, sir, hello, sir. Hi, So, Gaurav. first of all, thank you, sir and ma'am, for doing all this session and helping us. It means a lot for us. Thank you. So, sir, my question is that जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं जिम में, तो एक तो होता है कि हम लेस वेट के साथ ज्यादा एक्सरसाइज मतलब ज्यादा रेप्स करें, या फिर ज्यादा वेट के साथ कम रेप्स करें. So, which one is better for doing? So to answer this question, Gaurav, इसके लिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट इसके लिए ये होगा कि आपका गोल क्या है. अगर आपका गोल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, आपका स्ट्रेंथ बढ़ाना है, देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एनीवेयर बिटवीन 3 to 6 reps मारो फॉर योर कंपाउंड एक्सरसाइजेस, नॉट फॉर आइसोलेशन एक्सरसाइज. ऑब्वियसली इन योर स्ट्रेंथ बिल्डिंग वर्कआउट्स आपके आइसोलेशन एक्सरसाइज के लिए जगह बहुत कम होगी. बट अगर आपका गोल हाइपरट्रोफी है, वेर आपको मसल की साइज बढ़ानी है, then anywhere between 6 to even 50 reps for that matter. So again, it depends how you define what is low reps and what is high reps. But most important over here being that कि अगर आपका डाइट अगर ठीक से नहीं रहा, तो आप चाहे कितना भी लो रेप्स मारो या हाई रेप्स मारो, आपका मसल ऑप्टिमली ग्रो नहीं हो पाएगा. And the second thing that I would like to add over here is that कि अगर आप लो reps भी अगर कर रहे हो या फिर आपका higher reps भी कर रहे हो, find the one which you are actually enjoying it, and दोनों में try to progressively overload. So say for example you happen to enjoy 6 to 8 wala rep range, go ahead, do it. ठीक है, good. It is going to give you results, okay. But make sure that your 6 to 8 rep range के अंदर भी आप week by week, month by month try to progressively overload. And progressively overload can happen not just in terms of increasing the weight, but it can also happen in terms of कि आप combined muscle connection improve हो रहा है, या फिर आपके muscle fibers जो आप recruit करते हो rep मारने के समय पे वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं. So it's not necessary कि आपको weight ही बढ़ाना हो. Progressive overload can happen in multiple forms.
Second thing is या फिर अगर आप 8 to 20 वाला rep range favor करते हो, then again you go and stick to your 8 to 20 rep range. Important aspect over here is that you enjoy so that you can sustain and you can stay consistent with it, and you need to make sure that you progressively overload in whatever rep range that you are playing with. Yeah. Does that answer your question? Yes, sir. I have one other question. And that Yes. what is the definition of a fit person? Like, how do I know I am fit? Ooh. Scientifically, I'm not entirely aware of the exact definition, but what I believe personally is that wait, this is actually the first time I'm getting this kind of question. When you look at fitness, right, there are multiple aspects of it. There is your cardiovascular endurance, there is your muscular endurance, there is your strength, your stamina, your agility, your reactions. All of these things combined together is what defines your overall fitness levels. So your physique alone is not. Now, to add to that, internally आपका body किस तरह से perform कर रहा है, that is also adding to your fitness levels. Then your mindset also comes into the picture over here. आप mentally खुश हो नहीं हो, are you happy with the way your life is going? So that also defines your overall fitness level. So all of these things combined together can be utilized to define for you as an individual how fit you are. Health and happiness दोनों का अगर आप balance अच्छे से maintain करोगे, तो I would say you would be the fittest person in the world. तो उस बात से याद आया कि आपका क्या ख्याल है अबाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि इंडिया में इट्स सच अ टैबू टॉपिक टू स्पीक अबाउट योर प्रॉब्लम्स, and whenever I have clients, I always tell them to exercise because exercise helps you feel good, more fit, happier, it releases happy hormones. Do you also tell your clients, like I as a mental health expert, I tell them to do physical exercise? जब वो आपके पास आते हैं, आप क्या बोलते हो उनको? Do you tell them meditation भी करो, या क्या तुम्हारे do you give them any this advice कि how it affects even your mental health, कि तुम physical health पे ही focus करते हो? No, obviously, the mental aspect does come into the picture because that is going to determine the efforts that you would put physically. If you don't have the right frame of mind, you are going to curse yourself, you are going to beat up yourself, and you're going to feel ashamed of the way you are physically appearing as well. So mental health does play a very, very big role, and I think physical fitness cannot survive without mental fitness, and not just mental fitness but a strong mindset as well. And in fact, one of the first communication that we send across to our customers over here at MSF is that fitness is more of a mindset rather than a physical activity. So once you control your mind, your body will automatically follow suit. So yes, it is absolutely crucial to prioritize your mental health, your sanity, and the way you look at life in general, because it's going to have a cascading effect in your overall well-being. Yeah, that's a good one. Actually, बहुत बार ऐसा होता है कि most clients, उनको मैं इतने tips, techniques, anxiety के लिए, stress के लिए पता नहीं कितना कुछ देती हूँ. तो आप भी exercises देते हो, आप भी उनको बोलते हो क्या करना है, पर consistency is a problem. They always expect results without putting in the effort. So they get this, the laziness कि gym को जाए, छोड़ो आज नहीं जाते हैं. फिर 2 दिन नहीं जाते तो फिर तीसरे दिन बोलते हैं छोड़ यार, जब 2 दिन नहीं गए थे और 2 दिन क्या फर्क पड़ता है. ऐसे वाले एटीट्यूड वाले क्लाइंट्स के साथ आप कैसे डील करते हो? See, this is what I said at the start as well, right? It's not like a t-shirt. Fitness is not like a t-shirt where you go to the store, you swipe your card, you buy the t-shirt, you wear it and you enjoy it. Fitness is something where you don't just have to swipe your card, but you also have to make sure that you put in the work. It is only then that you will be able to enjoy. Of course, there will be periods of laziness and lethargy coming in, but obviously since we've been in this business of online coaching, we've been doing it online before the start of the pandemic, right? So because we've been only online since the start, we've created systems and processes to make sure that we keep our customers motivated and keep their consistency up high. And one of the key ways that we do that is by customizing it
to your particular requirements. And like I said, I never force feed you anything. I never make you do things which are going to make you go out of your way. I understand your lifestyle, and according to that, I give you a routine that you can sustain and you can follow. Okay. That's great. What is BCAA and creatine? What is their role? BCAAs are branch chained amino acids. They are supplements which is being sold by a lot of supplement companies. But I personally believe that BCAAs is not a supplement that you need to take, because if you're consuming whey protein, your whey protein usually ends up having branch chained amino acids. So if you're not consuming whey protein, then you might want to look at getting BCAAs. But then अगर आप BCAA supplement की तरफ जा ही रहे हो तो उससे अच्छा whey protein ले लो, because it's going to have more benefits for your body. So not really required. Creatine is something which is an interesting supplement, especially from muscle strength and muscle fullness standpoint. Creatine, especially creatine monohydrate, is one of the most widely researched supplements in the industry today, and it has been shown to not have any kind of a side effect. What creatine does is it basically helps it basically transfer the water and stores it inside the cells of your muscles, which helps your muscles look more fuller and more rounder. And the benefit that you get in the gym is that you're able to push for that 1 extra rep or 2 extra reps, or lift that 2 extra kgs for the same given number of reps. And obviously, if you're able to push that 1 extra rep, you're ripping apart more muscle fibers, which does eventually lead to more and better muscle growth. So yeah, that's the Women advantage don't of need to take, I mean, creatine. unless if I'm weight training and I'm wanting to get this kind of bulk muscle, otherwise, generally, regular people don't need to take creatine. Is that the thing? It's not a standard thing that you would be required कि इसके बिना तुम्हारा muscle नहीं बनेगा. Muscle बनेगा. It's just that with this, your muscle is going to end up looking a lot more fuller and rounder. So it's not something that I would advise you to start on your day one itself. I'd rather have you take whey protein, probably omega 3s, and if you're deficient in B12 and D3, which most likely you will be, start with those supplements first. Magnesium is another thing that you would want to look at as well. Creatine is something that would come at a later stage when you start becoming more consistent, because again, for creatine to work, you have to make sure that you consume it consistently every single day, including the days that you don't work out. अच्छा. वो अगर आप 1 महीने करोगे तब जाके आपको creatine के benefits मिलेंगे. So to reach the level where you would want to consider taking creatine, first you focus on your basics, get your diet right, get your workouts to be consistent, make sure you stay consistent with your diet as well, get the other deficiencies in terms of nutrients sorted out. That's after all of that is done is when you would want to look at getting creatine into the picture. Okay. And tell me something. अभी काफी आते हैं जो जिनको वेट लॉस करना होता है, पर कुछ बच्चे हैं बहुत स्किनी है एंड बहुत उनको बुली किया जाता है, उनको पीपल इन द स्कूल कॉलेजेस उनको रैग भी करते हैं फॉर बीइंग सो. कोई लोग बहुत ज्यादा पतले होते हैं. what do you recommend for them to gain weight, and what can they do? So and is he a vegetarian also, because this particular question is that he's vegetarian. So. Right. So again, being vegetarian is not an issue. Just so that our audience over here knows, I am pure vegetarian. I don't even consume eggs. And in fact, I have even stopped consuming paneer for the last 8-9 months. And the only dairy product that I would probably be having is whey protein and ghee. In terms of my diet days. Otherwise, on my cheat days, I would go and have dessert. So I wouldn't call myself a vegan. I am a vegetarian for sure. And like I said, I don't even consume eggs, right? So when I'm going to answer your question, I can tell you from personal experience as well that being a vegetarian is not a disadvantage. People have put this story in your mind. Just give me 1 second. Yeah. I need to pause this. Okay. Please go ahead. Yes. So people have put this there's this story floating around which has made us believe that vegetarian people can't be fit. And I am a living example of putting those notions down and shooting them down. So number one, vegetarian is not a disadvantage for you. Number two, just how with weight loss, we spoke about energy balance in terms of getting a calorie deficit. In terms of weight gain, it's the other side of the equation where you need to make sure that you're in a calorie surplus, which basically means you're supposed to consume more
number of calories than what your body is burning in a day. Now, often people have this misconception that, oh, I go and work out in the gym for 1 hour, I've burnt 400 calories, so I need to consume 500 calories. No, man, like your body is burning energy or calories, I would say, constantly through the course of the day. Right now, I'm doing this, I'm talking, I'm fidgeting, I'm bouncing. It is constantly burning energy. I'm fidgeting, I'm walking through the day, I'm sleeping. My organs inside my body are doing some work. My muscles are constantly breaking down and building up. That is also constantly doing work. So all of these things combined together is making your body burn certain amount of energy. Usually what happens with these skinny people or like really really thin people is that bodies end up burning a lot of calories even despite not doing exercise. And number two is appetite faces an issue where you can't simply consume a lot of food. Right. So here you would want to apply the I can't get the word right, but the exact opposite of what you did in a calorie deficit. In calorie deficit, if you look at your stomach, we filled it with high volume, low calorie foods. Here you would want to fill your stomach with low volume, high calorie foods. So high density volume foods, your peanuts, peanut butter, oats, high calorie fruits like banana, mangoes, and stuff like that, apple. These are the things that you would want to prioritize in your food intake so that your stomach can consume higher amount of calories and still occupy a small volume. So again, your appetite issues don't come into picture. And second thing is you want to gradually work on building that appetite, because आप कुछ भी कर लो, आप चाहे कितना भी, like when I said these different foods like peanuts, peanut butters, bananas, oats and stuff like that, don't consider that कि ये खाने से आपका weight gain होगा. ये आपको हेल्प करेगा कैलोरी सरप्लस अचीव करने में. And in order to finally reach that calorie surplus, and if you're suffering from appetite issues, start slow. Add 100 calories every day, add 50 calories if not 100 every day, and not every day but every week passing by or every 2 weeks passing by. Slowly build your appetite so that you can start consuming more calories than what your body is burning through the course of the day, and eventually you will end up reaching that calorie surplus. Now, when you reach that calorie surplus, you are consuming excess amount of energy through the course of the day. What your body will do is it will start storing that excess energy. It has two ways in which it can store your energy, either in form of fat or in form of muscles. So you would want to make sure that that excess energy is being converted into muscles rather than being deposited as fat. So what you got to make sure that is then you start doing your weight training workouts. You got to start going to the gym, lifting your weights, doing your exercises in the right fashion through a structured protocol, so that the excess energy that you're consuming is being utilized to build muscle rather than being deposited as fat inside your body. So yeah, that's how you will end up gaining weight. And in order to gain weight in a healthy fashion, like I said, do your weight training workouts so that you would want to maximize the lean muscle tissues that your body has. This is the healthy way to gain weight. So yeah, I hope I've given you a starting point in terms of how you can get started. But if you still struggle with it, please find me on Instagram, or you can always reach out to me on email, or you can even look at my website. It goes by my name, Miten says SAYS fitness.com, www.mitensayesfitness.com, and you'll find a form over there. You can get in touch with me and we can discuss in further details if you struggle. Okay, someone has written, sir, please suggest steroid cycle for beginners. Do you suggest first and foremost steroids, and what kind, and do they really need to take that? First and foremost, say no to steroids. See, this is what I was thinking. Explain to them why, because ये लोग को समझ नहीं आता. Okay, explanation. Again, as a beginner, number one, you don't need it. It's only after you have certain amount of muscle mass in your body and you would want to step on a stage and you want to do more, is when you would want to consider taking steroids or growth hormones. But again, that is usually taken by athletes who step on stage because they have high standard requirements and criteria. The bodybuilding people that you see on the stage, in fact, which we epitomize as being the most fittest, is actually the most unhealthiest person you would
probably have on the planet in that particular instance, because unsustainable levels of 3%, 4% body fat, brain is not functioning that correctly. A lot of people have died as well because of pushing your body to that particular limit, and of course through abuse of steroids as well. As a regular individual like you and I, if you're not planning to step on the stage, you don't need steroids. You've probably seen my body in the poster which Rachna ma'am over here had put up, and it has been created, and you can achieve that kind of a body without taking steroids as well. All you need to do is trust the process, trust the science, and consistently put in the work. Do it for 1 year, 2 year, 3 years, 4 years, 5 years, 10 years, and So you will get an amazing body. what is the side effect of these steroids? If you could guide, like give a little bit of what is Death, the reason not to do it? death. Okay. One is death, the other is erectile dysfunction in men. You wouldn't want that either. So these are the two biggest reasons which should be enough to convince you not to take steroids. Yeah. Because Second and third thing is you don't need it. You don't need it. Like Yeah. it's just that the gym trainers in the industry, in Indian fitness industry, have again, it's the stories that has been told and passed on through the generations that बिना steroid के body नहीं बनेगी. Similar to vegetarian होके body नहीं बनेगी, similar to बिना whey protein के body नहीं बनेगी, similar to बिना अंडे के body नहीं बनेगी. These kind of statements are being usually passed on by people who have lack of knowledge, or they have an agenda or a conspiracy. Yes, correct. To spread. So don't fall for these. Keep your health as utmost priority. Once you get your health prioritized, your physical outlook is going to be speaking it for itself. Right. And बच्चा लोग जो एक तो पहले वाले एक टॉपिक पे I want to tell everyone something कि काफी क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास ये बोलने के लिए, जो तुम लोग उनको जब बुली करते हो, ट्रोल करते हैं, जब वो ओवरवेट होते हैं या बहुत ज्यादा स्किनी होते हैं, ये उनके हाथ में नहीं है काफी हद तक. यस, हम खाना वाना करते हैं तो वो फर्क पड़ता है और वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट प्लीज डू नॉट बुली एंड ट्रोल समवन इफ दे आर एक्सेसिवली थिन और एक्सेसिवली ओवरवेट. Don't they carry that trauma fast forward into their life? Yeah. Yes, so body shaming is not a good thing to resort to, but I think schools nowadays are also taking harsh actions and having protocols in place to make sure that bullying is reduced, body shaming is reduced as well. And yeah, even if you happen to get shamed for your body, understand that one person's opinion will not define who you are. You as an individual, you as a human being are capable of a lot more. You are worthy, and you can also start living your best life no matter what shape and size you might be in. So yeah, and just the fact that you are a human being, remember that you're not someone what other people have told you. You are a human being, and human being itself is a very intelligent individual and a high performing and efficient individual. So understand that, and once you do understand that, then other people's opinion about you, your body or whatever it might be, will never matter to you, and you can stay highly motivated to achieve and live your best life. Thank you. And I know you said last question, so I'm going to just pick any question from YouTube. अगर से नेक्स्ट टाइम मितेन जी के पास टाइम होगा तो वापस आएंगे, पर एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि इफ हम जिम जाते हैं, मसल गेन एंड ऑल दैट रिक्वायर्स लिफ्टिंग एंड बॉडी जॉइंट्स, whether it's you're on a treadmill or whatever, there's a lot of injuries which can happen, or people who jog on the treadmill also or lift weights, किसी को tennis elbow हो रहा है, all these fitness things do take a toll on your body. So what can one do besides, of course, don't do high paced things? Is this some supplement or something? Does glucosamine or vitamin D, or what do you suggest? What does one do to avoid the injuries? Shortest answer to this would be get yourself a fitness coach who understands your current body condition and helps you with a protocol and a routine which will help you ensure that you work in your fitness goals without getting injured.
Long answer to this again, like I said, with every single aspect, there is no one single answer that is कि नहीं इसी के वजह से हो रहा है. Injuries can be through multiple reasons. It could be probably due to you not doing your warm-ups properly and you're not doing your stretching post your workouts and letting your body cool down. It could also be due to you not resting enough, not getting enough sleep at night, and it could also be due to overtraining. You're doing a lot of exercises unnecessarily. Injuries can also happen through deficiencies inside your body as well, like you said, vitamin D deficiency agar hai tumhare body ke andar. So there are multiple reasons due to which injuries can happen, and like I don't think I've said it before as well, but it's a complex procedure. Like your body is a complex procedure. There's millions of things happening inside your body, and obviously there is no one particular solution that is going to be like कि नहीं आप ये करो तो आपका सब चीज has been taken care of. It is a complete 360-degree approach that you need to take towards your fitness, and that includes your nutrition and workouts that I already spoke about, but it also includes your hydration levels. It includes your sleep and recovery, and it includes your stress levels as well. Okay. A lot of these 5 things are going to affect how fit you are as an individual. So and of course mental fitness is also, your mindset is going to play a big role, but these 5 things are some things which physically we can control, and hence I would say that if you start to look into each of these, start prioritizing each of these aspects in your fitness journey and not just rely on going to the gym alone, is when you will be able to excel in terms of your fitness levels. Thank you so much, Miten. It was really wonderful talking to you, and This काफी was ज्ञान प्राप्त fun. This was fun. This was actually absolutely a lot of fun. Some exciting questions have come in from you as well, and even from the audience, apart from the ordinary. Sir, weight कैसे lose किया जाए या फिर belly fat कैसे घटाया जाए. I really appreciate Rachna for you inviting me, and thank you once again for having me on this show. Some really exciting questions, like I said, from the audience as well. And just on a parting note, guys, I am in this industry for passion, for helping other people out and living their best life. So I don't charge for answering your questions. And if you guys have any further questions, or if I've missed out on answering anything from over here, please get in touch with me. You can find me on Instagram. Rachna, if you can put the I'm Instagram following link. you, so I will anyway post it. But तुम लोग देखोगे, मैं इतने लोगों को फॉलो नहीं कर, मितेन को ढूंढना इजी है मेरे वाले फॉलोअर्स. No, but still, like if you can put the link. Yeah, I'll put it on the YouTube description. After this is over, when it gets on YouTube, I will post your link. Yes, post the link of my Instagram, of my website as well, and even my email ID. My doors are always on WhatsApp. Then I will send it to you right after this, or I can even send it over here as well. Yeah, you can do that. I'll just post it on YouTube. Actually, no, I will have to copy and bring it over here. I'll just send it to you on WhatsApp after this. मुझे description में डालना है. मुझे chat में डालूंगी तो घूम हो जाएगा. So later on it will go in the description. Yes, yeah, you can. Yes. So my doors are always open, guys. And any kind of doubts, questions, queries that you might have on your fitness journey, or if you're struggling with anything with regards to your physical fitness, then please don't hesitate to reach out. I would love to help you out. And like I said, मैं क्या बोलते हैं, मैं questions answer करने के पैसे नहीं लेता हूँ. So come, let's have a chat and let's overcome your woes, so that you can start living your best life. Thank you so much, Miten. Thank you for being here. Have a good evening. Thanks, Rachna. You too. Good night. Good night. Bye, guys. Thank you so much. You guys have also been a pleasure, a lovely audience, and thank you for tuning in. And I will hopefully look forward to connecting with you on a personal level. Sure. See you. Thank you so much. Bye. Sorry, Utkarsh, I couldn't ask more questions. जैसे Miten ने कहा कि you can ask him. I will post the link later. Description में होगा. Then you can contact him. और कोई questions? ये कौन था महानात्मा जो कह रहे थे Indian accent is hilarious. What is hilarious about it? Would you please explain? I mean, I'm guessing. Is there something some accent which is
that we are supposed to have. Why can't we speak the way we are? We are human beings as long as we can communicate. For the accent really doesn't matter, right? That way, then you will start saying this Spanish accent is like this, French accent is like that. क्या फर्क पड़ता है? As long as you can communicate with the person and you can get your points and thoughts across, the person can understand you. That's what language is for, right? सबकी accent, पता नहीं आपकी accent कितनी great है और किसने आपको कहा कि आपकी accent अच्छी है कि आप दूसरों के accent के बारे में बात कर रहे हो, पर चलो ठीक है. Pradeep wrote, thank you so much for your valuable time. Thank you for being here. Thank you, Yuvraj, for your questions. And of course, Raj was here. Rohit wrote, ma'am, you're looking good today. Acha, thank you. Anuradha, hi. Hi, Gaurav. And I think I didn't ask some questions because बहुत ज़्यादा थे और उन्होंने text कर दिया था कि उनको जाना है. ठीक है. So next time अगर से I have one more podcast with किसका spine injury? अच्छा, Abhishek, after spine injury, now I am recover. Can I go to gym? Wo, I don't think, Abhishek, you should ask him, because you should hire a trainer and get yourself someone who can give you that day to day guidance. ऐसे ही तुम नहीं बोल सकते कि तुम जा सकते. पहले तो अपने, अगर से स्पाइन इंजरी हुई तो आपका ऑर्थोपेडिक सबसे पहले आपको यस या नो बोलेगा और फिर आपको बोलेगा फिजियो वाले एक्सरसाइजेस पहले करें, फिर जाके कहीं आप जिम जाओगे. आई मीन ये तो लॉजिक बेसिक नॉलेज है जो मुझे भी आता है. और जब जिम जाओगे तो एक स्पेसिफिक ट्रेनर रखोगे जिसको पता है कि जैसे आई हैव अ नेक एंड बैक प्रॉब्लम, राइट? That's the first thing I tell any of my trainers, that hey, listen, don't give me this excessive weight training or zyada karna on my back, my ankle. These are my like 3 weak areas, so you need to be careful. Now this session is going on another level. Yeah, Gaurav, as usual, वो हमारे दिल में रहते हैं. कौन दिल में रहते हैं? कौन दिल में रहते? Okay, Kamu Tarliya Saparthi. Okay, like an angel. Okay, thank you, Gaurav. So sweet. Oh, by the way, what Gaurav? This is the second time he does. He Googles in English and then he translates and puts it in Bahasa Indonesia. Where do I live, Sunny? Sunny, I live in Jakarta and I'm moving to Dubai next month, around 8th of August or something like that. Mera ghadi keh raha hai time to stand. Sorry, मैं 2 घंटे. I think 1.5 hours we've been at this. And sorry, Utkarsh, I couldn't answer your question, or nor could he. Even Yuvraj, you wrote one more question, so sorry, baad mein kabhi aur. Okay? It took me 22 days to recover completely. Acha, okay. That was not bad actually. 22 days is pretty good if you had a spine injury. It doesn't seem like much because generally jinki hoti hai, any kind of injury takes so much time. Hi Sumit, how are you? ओके, कौन हमारे दिल में रहता है? मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ कि स्टडी सिंह किस, वो हमारे दिल में रहते हैं. सनी ने क्या लिखा था? अच्छा हाँ अच्छा नाउ आई गॉट इट. सॉरी मैं अचानक आई वाज लाइक थिंकिंग देयर इज नो कनेक्शन टू दिस. और बाकी लोग कैसे हो? तुम लोग सब ठीक है? मैं चलूं आज के लिए. मैं लेमन डाउन कभी और करूंगी. अगर से स्पेसिफिक तुमको कोई क्वेश्चन है तो बता देना. लाइक अभी या लेमन डाउन. यार एक मिनट, मेरे आंखों में मेरे खुद के बाल चले गए. आउच. हाँ तो क्या मैं बोल रही थी? हाँ, बाय द वे पंकज, यू जस्ट टेक्स्टेड क्या डिफरेंस बिटवीन हेल्थ फिटनेस. अच्छा, तुमने कुछ लिखा है क्या? अच्छा अभी सॉरी मैं तो नहीं पढ़ सकती बात करते वक्त, बट अगर से चाहिए तो यूट्यूब पे पोस्ट कर दो, लोग पढ़ के आपको बताएंगे कि आर्टिकल कैसा है. अच्छा, क्या क्वेश्चन है? माय सिस्टर इज ऑलवेज गेट्स इनटू रिलेशनशिप वेयर द बॉय इज अ लायर. ओके अच्छा ओके, बट you know, okay, Sumit said great, thank you, hope you are, how you are? I'm fine, thank you. अच्छा, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन किसने लिखा था? उत्सव मित्तल says my sister always gets into relationship where the boy is a liar. Okay, देखो, हम जितना भी चाहे हम हमारे फैमिली मेंबर्स को, दोस्तों को उतना ही बता सकते हैं. एक तो पहले अनसोलिसिटेड ज्ञान नहीं देना चाहिए जनरली, मतलब जब तक पूछते नहीं. सेकंड, जब वो रोना धोना हो रहा है, शी इज ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम हर एक्सपीरियंसेस. एंड अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे किस्म के इंसान हैं कि
आई मीन सॉरी ऐसे किस्म के इंसान नहीं, हमारी इंसान की स्पीशीज जो है ना, हम ऐसे ही होते हैं। हमको दूसरों का सुनना नहीं होता, हमें एक्सपीरियंस करके सबक सीख के रोना धोना करके फिर हम सीखते हैं। एंड लेट हर लर्न हर लेसन, इवन इफ शी इज यू नो शील बिकम वाइजर लाइक दिस। आई नो यू आर प्रोटेक्टिव अबाउट योर सिस्टर एंड we want to protect our family, but let her learn the hard way. That's how अक्ल ऐसे ही तो आती है ना, बादाम खाने से थोड़ी आती है। तो आई मीन या उससे मेमोरी ठीक होती है पर अक्ल नहीं आती। तो let her learn, let her get involved with boys who are liars, and hopefully she will learn to discern later कि जब next time धीरे धीरे वो भी grow होके वो सीखेगी कि अच्छा, of course she is going to develop trust issues a lot, because क्या होता है जब तुम किसी के साथ एक रिलेशनशिप में होते हो, वो तुम्हें चीट करते हैं या लाई करते हैं, आप नेक्स्ट रिलेशनशिप वो झूठ भी नहीं बोलता होगा, तुम फिर भी उसके साथ अपसेट हो जाते हैं कि यार ये इंसान ने तुम नहीं भी करते हुए वो सामने वाला तुमको डाउट करता है, तो दैट विल बी हर बर्डन टू कैरी, सो दैट विल गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, बट लेट हर लर्न, इट्स ओके। एंड एज लॉन्ग एज ही इज द what I would tell your sister, ठीक है liars तो वैसे तो मैं देखती हूँ क्योंकि lying has become such a common thing unfortunately, but चलो ठीक है, but as long as उसको physically वो hit नहीं करता and he's not over possessive and doesn't treat her badly, in you know what I mean, and yes of course if he's cheating and lying, let her learn a lesson, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। She's insecure about her looks. See now what happens, I'll explain. She wants to get married and asking dowry. You can all read and share. Okay. So the thing is this, okay, she wants to get married, okay. हाँ ऊपर हे गौरव महान आत्मा, क्योंकि obviously when you're sitting right in front of the damn thing, the whole focus is like that. Actually I'm not thin, but I'm not overweight either. Abhi can I please answer the question? तो देखो, the reason, because perhaps she's so insecure about her looks and hence equals to her self-worth is low about herself, so she thinks that she only deserves these kind of झूठ बोलने वाले और जो चीट करने वाले लोग, तो शी इज अट्रैक्टिंग दोज पीपल बिकॉज अदरवाइज उसको लगता है शी इज नॉट वर्दी ऑफ बेटर गाइज इन हर लाइफ। तो you will have to get her to talk to someone. If she wants to come for counseling, she can, but she'll have to work on herself. There is no other way. I mean, if someone is asking for dowry, first and foremost it's illegal. Even if she's, I don't know how old is your sister, इतनी क्या चुल मची है शादी करने की, पढ़ाई करो, करियर बनाओ, फिर शादी करो, ऐसा ना हो ये जो झूठ बोल रहा है बाद में छोड़ देगा या कुछ मैरिज अच्छी नहीं जाएगी, फिर what is her plan of action? So that is, tell her please पढ़ाई करके काम करो फिर जाके शादी करना, और डाउरी आपकी मर्जी, of course it's illegal, so look for a guy who doesn't ask for that, you know. हाँ प्रदीप, इसके होने या ना होने से तुम्हें क्या, किसके होने से फर्क नहीं पड़ता क्या? Elon Musk's father has a secret child with 30, yeah I read that, yeah. अरे मेरे को क्या मालूम is this true, वो खुद ने उसने बोला है तो है, अभी मैं क्या करूं। तो you know, अपने बाप का क्या जाता है, अपने बाप का नहीं, तुम्हारा क्या जाता है, तुम लोग काहे इतनी चुल मची होती है, सुष्मिता सेन क्या कर रही है और ये इलॉन मस्क का बाप क्या कर रहा है, अपने से क्या लेना देना यार, करने दो, जो उनकी लाइफ है वो करे, तुम लोग का, तुम थोड़ी उनके बिल्स भरते हो जो क्वेश्चन पूछते हो ये सब, तुम लोग को ना बहुत फ्री टाइम है यार, पढ़ के इग्नोर करो ये सब, अपने लाइफ पे फोकस करो। 22 सो यंग, ओके, उसको बोलो पढ़ाई लिखाई करे, करियर बनाए और फिर शादी करे, प्लीज फॉर गॉड सेक, शी इज मैड फॉर हिम एंड क्राइंग, ओके। एंड व्हाई इज शी क्राइंग, व्हाई ही लेफ्ट हर, और बिकॉज ही इज आस्किंग फॉर डाउरी? आई डिडंट अंडरस्टैंड। अगर से रचना मैम, अगर आप महान आत्मा नहीं, हम महान आत्मा हैं तो आप क्या, मैं तो एंजल है, मैं कुछ लगा था, तुमने तो अभी लिखा था, तो फिर मैं महान से भी महान हूँ, ठीक है, ओके। अच्छा, व्हाई शी क्राइंग फॉर हिम, समझाओ। यू सेड ही लाइड, राइट, कि वो डाउरी मांग रहा है और आप लोग डाउरी नहीं देना चाहते, इसलिए वो, व्हाट इज द रीजन, थोड़ा क्लैरिटी लाओ।
अरे मूव्स फिट, तुमने बोला एवरीबडी कैन रीड, पर आर्टिकल का लिंक तो तुमको नहीं। महान इंसान है मैम। ओके, थैंक्स स्टडी सिंह। तुमने जो आर्टिकल भगवान ही जाने कहाँ डाला है। ओ अच्छा, मैं पोस्ट करना चाहिए ना। तुम्हारा लिंक कहाँ गया? एक मिनट रुको बाबा। अच्छा, ये कॉपी भी करने नहीं दे रहा है, का है ये कॉपी? व्हाई कांट आई कॉपी दिस? Okay, wait. I copied something, guys. Just read this article and give your feedback. I have not written it. This person moves it has written it. Okay. Good evening, Amol Singh. Normally, Amol के बीच में दो ए नहीं होते. तुम्हारा नया है. She wants to marry him and his parents are denying. तो पेरेंट्स डिनाई कर रहे तो इंडिया में वैसे भी कहाँ तुम क्या वो भाग के शादी करने वाले हैं? नहीं, अगर से वो पेरेंट्स डिनाई कर रहे और लड़का सुन नहीं रहा है तो फिर क्या फायदा? आई मीन व्हाई शी बिहाइंड? आई मीन यार ठीक है, शी लर्न अ लेसन यार। बिना रोए धोए और इंसान सबक सीखता नहीं। मना कर दिया, हम इस लड़के से शादी नहीं कराएंगे। अच्छा, तुम्हारे पेरेंट्स ने? अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा उस बंदे की पेरेंट्स ने। ओके ओके। अच्छा, क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि वो डाउरी मांग रहा है इसलिए? क्या रीजन है? ठीक है। अच्छा, आई डिडंट इवन नो मेरे पास एक नया ऐप आया। ओके हाँ। पंकज मैम, पंकज क्या? पंकज क्या? नहीं नहीं, वो तो ठीक है। तुम्हारा आर्टिकल नहीं आया था तो मैंने एनीवे कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। तुमने नहीं डाला था। नो क्या अभी? अरे हाँ ना, तो फिर क्यों ना बोल रही तुम्हारी फैमिली? क्या प्रॉब्लम क्या है? कल्चरल डिफरेंस इंडिया। ओह अच्छा, तुम तो कहीं और चले गए। मैं उत्सव का, अच्छा उत्सव तुम प्लीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे। आपके पेरेंट्स ने ना क्यों बोला? वो लड़का झूठ बोलता है इसीलिए, डाउरी मांगता है इसीलिए, अच्छा इंसान नहीं है इसलिए, काम नहीं करता इसलिए, क्लास डिफरेंस है, क्लास मतलब अपर मिडिल व्हाटएवर, या कास्ट डिफरेंस है, रिलीजन डिफरेंस है, रीजन क्या है? Okay, what is the cultural difference between Indians and Jakarta and Indians and Indonesians? Let's try to break it down a little bit. क्योंकि इंडियंस भी लाइक सब इंडियंस एक जैसे नहीं होते, वैसे इंडोनेशियंस भी एक जैसे नहीं होते। बट मेजर डिफरेंस आई सी इज द पेशेंस लेवल। हमारे इंडियंस में बहुत कम पेशेंस होता है और इंडोनेशियंस में बहुत अच्छा लेवल का पेशेंस है। आई रियली एडमायर दैट अबाउट देम। And they are calmer as people. They are more helpful than us Indians. They're not as selfish, at least what I have seen. I have not really, I still have to witness somebody who's not a nice person. I mean very, yeah, ऐसा नहीं करके बिल्कुल बुरे लोग नहीं है। Of course होते हैं, यहाँ भी crimes होते हैं, तो ऐसा नहीं है। But जितना मैंने हमारा स्टाफ हो या इर्द गिर्द के लोग हो या जब तुम मॉल जाते हो, सैलून जाते हो, बहुत बहुत सुलझे हुए काम डिमीनियर के। सबसे ज्यादा मुझे आई थिंक आई एम गोइंग टू मिस दैट द मैक्सिमम। आई एम नॉट यूज्ड टू एनी एग्रेशन एंड even if you get upset or something, they make you look so ridiculous when you get upset because they don't get upset. I mean, I have never seen any हाँ उनके बीच में होता होगा, पर हमारे साथ कभी मैंने नहीं देखा कि वो लोग हमको रिटर्न में कुछ बोलते हैं। So I find that very interesting. Even like when I went driving, I was learning driving recently, and if I was in Bombay ना, अभी तक मेरे को किसी ने पूरा मेरी एक्सीडेंट हो गया, they were like fuck off, move from the side, and पै कर करके दिमाग खराब हो जाता है when you are learning also. So that's one thing I saw कि थोड़े बहुत तो पेशेंट नहीं थे, थोड़े बहुत। I guess I was taking like too much time on the road, but otherwise it was very interesting to watch. Like वेट कर रहे थे, बेचारी को जाने दो टाइप्स वाला। So that's very interesting. Even now, if I keep quiet for a few seconds, you will not really hear any honks and horns. So that's what I love. Other thing, अगर से तुम कभी ऐसा नहीं करके इधर beggars नहीं है, तो जब वो begging भी करते हैं, पता है तुम, if you're sitting in a car or wherever you are and you just do this, like sorry, that's like their way of saying sorry, we can't give you anything. They immediately walk away. They, unlike हमारे इंडिया में जो बेगिंग करते हैं, ठक 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 ठक, तुम उसको हाथ दिखाओ, ऐसे करने बोलो, कुछ भी बोला जाओ, या हमारा तो वैसे ही नहीं सुनेंगे, राइट? यहाँ पे इतना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है
बच्चे से लेके बूढ़े तक, जो भी अगर से चाहे वो फूल बेचते हो या कोई टिश्यू पेपर बेच रहा है या बेगिंग कर रहा है, you just have to do this and they understand that the person is not interested, they will move on. I find that so fascinating that क्या तो इनका लेवल ऑफ ये है कि चलो ना बोला ना, यहाँ और देर नहीं टिकना चाहिए. So those are the differences. मुझे लगता है the Indians have to improve so much. I think we are way too aggressive, and you know what I have also realized कि I can't say it's a cultural difference because I don't know no Indonesian I interact with this much. So, but we Indians are pretty selfish. I swear, you know, I think quite a few of you who are following me on Insta or YouTube properly, you know, I have posted this about my friend who has leukemia, and अगर से मैं कोई सुष्मिता का कोई रील डालती ना, या इवन इलॉन मस्क के डैड का कुछ डालती या समथिंग, ज्यादा रिएक्शंस आते हैं, ज्यादा लाइक्स शेयर्स. तो आई फील वी हैव नो टाइम फॉर एनी अदर ह्यूमन बीइंग, एंड दैट मेक्स मी वेरी सैड कि वी आर सो, जब तक तुम पे नहीं आती ना तब तक तुम लोग एक दूसरे को मदद नहीं करते. दैट्स द सैड पार्ट, एंड आई एम नॉट लाइक दैट. इवन दो आई एम इंडियन, I am not like that at all, at all. I will always help, even if it is not me. I mean, I wish, yes, at least like 75% अगर से इंडिया का हो जाए ना ऐसे इंसान, हमारी कंट्री इतनी तरक्की करेगी, हम लोग ज्यादा बेटर सोसाइटी बनेंगे, ज्यादा कामर, ज्यादा पेशेंट. कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता, किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है. That's like so sad. So it made me also wonder, like, wow, where is the world headed? But ठीक है, it's part of life, and I want you all to, I'm planning to, let me see, I want to make you all understand. I was fascinated. So till my friend didn't have leukemia, even I didn't know what is a unrelated blood stem cell donor. मुझे लगता था कि जो बोन मैरो जो होता है, उस दो टाइप्स होते हैं. एक है जो तुम्हारे हिप बोन से, नॉट फ्रॉम योर स्पाइन. अभी इवन आई लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स कि तुम्हारे हिप बोन से निकालते हैं. दैट इज लाइक अ प्रॉपर जनरल एनेस्थेटिक के अंदर सर्जरी से होता है. पर ये वाला जो है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ब्लड डोनेशन. तो they showed us, like I'm trying next Friday to go live on YouTube. I have to still get their permission because we are doing another awareness wala, and I want you all to understand, क्योंकि it's the third largest illness in India, blood cancer, and so many people don't know कि you don't need to be a blood donor. A blood donor and a blood stem cell donor is separate. You don't need a specific blood type. You need to, even if you're an Indian, a Caucasian won't help because हम लोग का DNA अलग है. तो यहाँ पे DNA matching होती है, और it's so fascinating कि कैसे वो explain करे. So I'll not talk so much about it. Hopefully when I do it next Friday with those people, many of you all will understand. And तुम सब बच्चे जो भी हेल्दी हैं, तुमको मालूम है, तुमको अगर से डायबिटीज है, जो भी इश्यूज है, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता. यू कैन स्टिल बी अ ब्लड स्टेम सेल डोनर, एंड इट इज वेरी वेरी नॉन इन्वेजिव. तुमको सिर्फ अपना ब्लड डोनेट करना पड़ता है. ठीक है, यू नो दे सेड कि सिर्फ फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड सिर्फ 8 घंटे ऑफ योर लाइफ. दैट इज इफ यू आर सिलेक्टेड as the match for the recipient. That's all to save a life. I was like, wow. And of course I'm 50 plus, तो मेरा और मेरी ethnicity also, और मैं जकार्ता में, यहाँ पे कुछ नहीं है. But like I was thinking that मैं इंडिया जाऊंगी, मेरे बच्चों का भी मैं I want to put it in the worldwide registry. Who knows, maybe one day they can save lives. And I've told all my family members to do it. After a certain age, only India allows if you don't have certain ailments. Otherwise everywhere around the world 30-40 max limit होती है एज की डोनेट करने की. तो आप लोग, मेरी तो यंग ऑडियंस हो, आई होप तुम लोग, बच्चा लोग, वो स्वाब टेस्ट करना है, उनको भेजना है, वो तुम्हें रजिस्ट्री में रखेंगे कि एक दिन अगर से किसी को जरूरत पड़े, it could be your family, it could be someone in the extended family, it could be anybody. तुमको पता है, वो बता रहे थे कि एक बंदा है जिसने बहुत साल पहले रजिस्ट्री में डाला था, उसने 2 बच्चों की जिंदगी बचाई है. एंड इट्स वेरी रेयर कि बैक टू बैक ऐसा इतना DNA मैचिंग होती है.
So it was, or they were not related to him. So it was very fascinating to learn. I hope all of you all will join that and थोड़ा सीख के let's अपने country वाले को ही मदद करो यार. तुम कहाँ दूसरों से मैं ये भी नहीं बोल रही दुनिया भर को यार मदद करो. Let's at least be there for our own country people. ठीक है. So पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ चली गई, but ठीक है. मैम इंस्टा लिंक किसका है ये? अच्छा मेरा इंस्टा लिंक. ओके. अच्छा हम कहाँ थे? सॉरी कल्चरल डिफरेंस. ओके ये लिंक पे बिकॉज ही लाइड अबाउट हिज फाइनेंशियल स्टेटस. यार मे भी बेचारा उसको लगता होगा तुम लोग जज कर रहे हो इसलिए उसने झूठ बोला होगा ना यार. और ऐसा क्यों है कि सिर्फ लड़के पे इतना प्रेशर डालना चाहिए? तुम्हारी बहन का भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है. काम करो और दोनों एक साथ भी तो आगे जा सकते हो लाइफ में. व्हाट इज दिस ऑल द टाइम एक्सपेक्टिंग द मैन टू प्रोवाइड? आजकल के जमाने में ऐसा नहीं होना चाहिए. Same happened to one of my female friend. Act the same way. The guy is intimidated by her rich family. That's very sad. अगर से other way around होता तो तुम क्या better feel करते? फिर वो boy बोलता अरे यार इतनी rich है कैसे चलेगा? अभी guys हमेशा लड़की को rich पति चाहिए. क्यों? साथ में क्यों नहीं तुम लोग आगे बढ़ सकते हो? It's so ridiculous, you know. And yes, I agree कि stable income होना चाहिए. और अगर से बच्चा होता है and she's planning to stay at home and he's going to work. I have people who actually do the reverse. बच्चा होने के बाद बाप घर पे रहता है और माँ काम करती है because depends किसकी ज्यादा education है, किसको better job है, क्या फर्क पड़ता है कौन सा gender काम कर रहा है. And that's really sad. I mean, we have to make that change. Like even for my daughter, I tell her that don't expect the guy to be super. Yes, they should come from a classy family. Class doesn't mean upper class. Okay, classy means etiquette होना चाहिए, consideration होना चाहिए, kind होना चाहिए, compassionate होना चाहिए. That is called being classy. They know how to handle themselves. They are not aggressive and all. वो तुमको देखना है कि वो क्या अच्छे इंसान है कि नहीं. मेरे लिए वो इम्पोर्टेंस रखता है. मेरी बेटी yes of course अगर से बहुत नीचे जाओगे अपने suppose you are from like say middle class और तुम completely नीचे जा रहे हो तो वो तुमको adjustment में problem होगी. Unless दोनों एक दूसरे को बोलते चल यार कोई बात नहीं मैं तुम्हारे लिए. Of course ये वो जमाना नहीं है कि हमने घर छोड़ा है रस्मों को तोड़ा है. वो कौन सा आमिर खान वाला जो गाना है और माउंटेन पे जाके रह गए, ऐसा तो नहीं होता. बट यस आई अग्री कि स्टेबल इनकम जरूरी है. बट क्या वो तुम्हारी बहन नहीं कंट्रीब्यूट कर सकती? तुम्हारे पेरेंट्स कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते? क्या वो अच्छा बेचारा डर गया होगा इसलिए झूठ बोला होगा? तुम जैसे लोग ही ऐसे लोगों को झूठ बोलने पे मजबूर करते हैं. नॉट दैट सही कर रहा है वो, और मैं नहीं कहती करके किसी ने झूठ बोलना चाहिए, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इट्स सो अनफेयर. He must have just got shit scared and he knew that you people will say no. But I think 22 is too early to get married, to be very honest. And if she's 22, how old is he? I hope not the same age and you're expecting like wonders from the father. Like तुम लोगों ने बहुत you know तुम लोग Elon Musk की औलाद हो. ये मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि खुद इतना नहीं होता, दूसरे से ज्यादा एक्सपेक्ट करते. Anyway, so Utsav, I think you should DM ma'am on Insta, then she'll be able to understand your case more. Yeah. Okay, he said he bought a new shop by parents' money worth and told my sister it's worth. ठीक है ना, आधा प्राइस इसलिए बोला होगा तुम लोग पे ये करने को. शॉप इज नॉट इन गुड एरिया एंड शी कांट इमेजिन दैट ही कैन लाई. ठीक है गलत तो किया, तो आई होप ही इज अपॉलोजेटिक. एंड शायद इसलिए झूठ बोला होगा क्योंकि तुम्हारी सिस्टर को इतना उससे एक्सपेक्टेशन है. खुद क्या कर रही है मेरे को बताओगे? आप लोग ने क्या झंडा गाड़ा है जो इसे एक इंसान पे ऐसे टूट पड़े हो सब लोग, पूरी की पूरी फैमिली. शी हैज गॉन मैड. ओके मैड नहीं, दुखी होगी क्योंकि तुमने ना बोला. और ठीक है उसने झूठ बोला. यार लोग कितनी बड़ी बड़ी झूठ बोलते हैं यार और स्कैम्स करते हैं. इफ ही इज अपॉलोजेटिक एंड ही कैन एक्सप्लेन व्हाई एंड ही इज नॉट अ सीरियल लायर, then try to understand why that person must have lied. Maybe because you're putting so much pressure on that poor guy. He's supposed to have a 1.5 crore shop and he's supposed to be in a great area. शायद उसके पास नहीं होगा. He's embarrassed. सोचना चाहिए कि इंसान lie क्यों करता है. तो भगवान कृष्ण ने कहा था, if I'm not, correct me if I'm wrong, not that I read all this, but मैंने सुना है कि कोई एक अच्छे कॉज के लिए झूठ बोलता है तो झूठ नहीं कहलाता. तो शायद उसने ये कुछ ज्यादा सीरियसली ले लिया इस बात को कि if I won't get caught. And trust me, at least he is not lying in that way that तुमको ठग रहा है as such. He must be just embarrassed of his situation. And 50-60 lakhs, if it's actually like that and his parents have that, man, why are you putting so much pressure? Instead, I would tell this guy, if your family is putting so much pressure on him, he should not marry the guy. I mean, marry the girl, because you people are making him
you're stressing him out too much. And how old is he? What's the age difference? If he's still young, there is so much potential. Baad mein, you know, when I married my husband, he was what, earning 10-15,000, and we got together and and that time even I was not working. But मैंने कभी इतना प्रेशर नहीं डाला, उनकी फैमिली ने भी कुछ पैसा नहीं दिया. They didn't give me anything during शादी, but we never looked at people from a materialistic point of view. We saw the potential that they had and how good they are, which kind of family they are from. वो भी तो मैटर करता है यार. तुम्हारी बहन को अगर से कोई, मैं इतने केसेस देखती हूँ, यू नो, क्या नाम है, नीजो जॉनसन वाला पेज, मिस मालिनी वाला पेज, अब्यूज वाला पेज, इतना इन लॉज तंग करते हैं लड़की को डाउरी के लिए एंड ऑल दैट स्टफ. अगर से वैसी किस्म की फैमिली है तो मत दो. उससे बेहतर बहन को थोड़ा देर रोने दो, थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगी. ऑफ कोर्स अगर से डिप्रेशन में जा रही है, एक साइकियाट्रिस्ट को दिखा लेना मेडिसिन देने के लिए, पर काउंसलिंग भी इंपॉर्टेंट है. तो बी केयरफुल. अगर से ये लड़का अच्छे फैमिली से नहीं है और सीरियल लायर है, फिर ठीक है, बनता है. बट अदरवाइज अगर से डिसेंट फैमिली से है और ज्यादा पैसा नहीं कमा रहा है, इट्स ओके. गिव हिम चांस यार, गिव देम टाइम इन लाइफ. Okay, no ma'am, in tier 3-4 cities girls don't get started marrying. And oh really, wow, I didn't know that. Recently in my locality a boy got, wow, that's so early. Because उनको लाइफ में, I mean I don't know, पता नहीं किस चीज की, या कृष्णा ने कहा, मुझे नहीं पता. हाँ, अच्छा, करेक्ट, हाँ ठीक है, तो I was correct. At least he has 60 lakh shop. I worked exactly Kapil, that's what I'm saying. See, फिर तुम लोग भी तो greedy बन रहे हो ना. और मैं एंटी डाउरी तो हूँ, लाइक अपनी बेटी को कुछ दे रहे हैं तो बेटी के लिए दे रहे हैं, ठीक है. बट अगर से दोनों फैमिलीज मिलके खर्चा करेंगे, शादी का खर्चा, और यू नो आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, हाय मैडम, हाउ टू टेल माय ब्रदर टू स्टॉप स्पाइंग ऑन मी. ओके, क्या ऑनलाइन, व्हाट इज ऑनलाइन मोड, हु इज दिस ना, ये वाला तुम्हारा क्या है, कुछ समझा नहीं. व्हाट इज ऑनलाइन मोड? I don't know, did I miss some question here? I don't know. What is online mode? I have no clue. Gaurav, what was this person who's read, if it's online mode then he can do it? I have no clue what it means. But and Archana, what do you mean by he's spying on you? Okay, so there is two kinds of spying. Okay, spying just because out of spite and out of anger, and that is bad. But if your brother is spying on you for reasons to protect you, you are blessed to have such a brother. Today I got a DM from one of the, he was 17, and जिन्होंने मेरा पॉडकास्ट देखा था इंसेस्ट पे श्वेताब के साथ और उसके बाद भी, and this guy was saying कि you know all these things, you're so lucky, you know, if you have a good brother who's taking care of you and is there for you, so why not? But you have not explained, so I don't know. Give me some context. What do you mean by spying? What does he exactly do? And if you have family looking after you and your well-being, you're like a very rich person. Look at it that way. Even when I was young, I used to think my brother is so bad. मेरे को गुस्सा करता था to talk to boys and all that. Then I realized where it comes from. One is the upbringing, okay, that we are not supposed to talk to boys, and it's like पाप कर लिया types वाला, वो एक है. Second ये है कि उनको मालूम है कि काफी लड़के कितने गंदे होते हैं और वो तुम्हें बचाना चाहते हैं, और हम गधे हैं, हम फैमिली की नहीं सुनते, हम ये सब फालतू चीजों में पड़ जाते हैं, बाद में रोते बैठते हैं. सो सी वेयर इट कम्स फ्रॉम. ओके 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 यस. About the bone marrow transfer, yes, it is going to be, I'm trying to link it, it's going to be a Zoom thing, and then it will come on my YouTube. So I want all of you all to watch. Please, जो भी मेरे 15 followers हैं जो देख रहे हैं, प्लीज इसके बारे में थोड़ा सीखो, learn about it. Trust me, you know, when any of your family members, God forbid, ऐसा कुछ हो, you're going to fucking regret this, that you are not in that registry when someone needs you, or and someone else is not in this registry when you need them. So be careful, you know. Don't, of course, I'm not saying be selfish, but remember, what goes around comes around, right? So try to help people as much as you can, and it's not a big deal. It's just blood going out of your bloody body, as if it's not you're giving a kidney or a lung or a liver transplant nahi kar rahe ho. So it should be this thing. Archana, please explain your question a little bit more. I think I gave my 2 bits, but in case
Okay, I have a good career. I'm glad career you have a good career. Okay, Utkarsh, right? My cousin sister got married to technical entry Indian Army officer. They paid 10 lakh dowry. अब जिसको देना है तो देंगे ना उत्कर्ष. अभी इंडियन आर्मी ऑफिसर है शायद इसलिए. देखो क्या होता है ना, मैं तुम्हें समझाती हूँ. If you remember my podcast with Astha, this was my, even I've still not figured this part out. I'm one of those कि मुझे ये पॉइंट पे मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा. नाउ लेट्स अज्यूम कि एक मैं सपोज ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ठीक है, and I marry this guy who's got like a good job and all that, okay, and then when I go to his house, I don't have to work, okay, there are maids, I'm just sitting pretty. What contribution am I actually making besides obviously procreating and then looking after the children? But let's assume, तो लड़की की भी प्रॉपर्टी फादर से आती है, लड़की को प्रॉपर्टी हस्बैंड से भी आती है. सोचने वाली बात है कि शायद इसलिए कि या पुराने जमाने में सिर्फ लड़कों को प्रॉपर्टी जाती थी इसलिए डाउरी देके भेज देते कि हमारा काम खत्म, तमाम, अब तुम जानो और तुम्हारा ससुराल जाने. तो शायद इसलिए देते थे. बट आजकल प्रॉपर्टी डिवाइड भी होती है, तो इन अ वे इट इज गुड बिकॉज हस्बैंड की बहन को भी नहीं मिलता था और हस्बैंड की बीवी को भी नहीं मिलता था. एज इन उसके पेरेंट्स, लड़कियों के पेरेंट्स अभी लड़कियों को भी दे रहे हैं, सिर्फ लड़कों को नहीं दे रहे. सो दैट वे इवन द डॉटर इज गेटिंग एंड द डॉटर इन लॉ इज गेटिंग फ्रॉम द डॉटर इन लॉ गेट्स फ्रॉम हर ओन पेरेंट्स एंड फ्रॉम द इन लॉज एंड लाइकवाइज विद द अदर चाइल्ड. सो इट शुड बी. एंड यस, आई ऑल्सो फील कि अचानक सपोज कोई 30 साल का लड़का शादी कर रहा है और ये लड़की उनके लाइफ में आ गई है और सारा प्रॉपर्टी फादर इन लॉ ने कमाया है एंड ऑल दैट. अचानक आके उस पे कब्जा करना वो भी गलत है, क्योंकि व्हाट हैव यू डन टू डिजर्व इट? जस्ट बिकॉज यू मैरिड दिस गाय सो इट बिकम्स योर्स? नो, यू हैव टू, देन यू हैव टू मेक श्योर कि तुम फैमिली को साथ में भी लेके चलते हो. अभी प्रॉब्लम क्या हो गई है आजकल की सोसाइटी की, बहुत मनी माइंडेड हो गई है. मैं देखती हूँ कितनी सारी लड़कियां फॉल्स केसेस में लड़कों को फंसा रही है, और मैं देखती हूँ कितनी एनिमोसिटी है इन सो मेनी पेजेस इंक्लूडिंग द मेन्स राइट पेज की. उन लोग सिर्फ पैसे के पीछे लगते हैं शादी करने के बाद, फिर बाद में जब उनको डिवोर्स देना है, ठीक है, जनरली अगर से लड़की काम नहीं करती और बच्चे हैं तो देन दोनों पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. मैं देखती हूँ कि मेन इवन से कि हम तो नहीं पे करेंगे, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग कि एलिमनी नहीं देते हो आप, शादी अगर से टूट गई है वट एवर. सो इट्स सो इम्पोर्टेंट, सच ए कॉम्प्लेक्स थिंग. तो अगर से वो बंदा उसको देख रहा है, उसको संभाल रहा है, उसके हेल्थ पे खर्च कर रहा है, एंड शी इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द फैमिली, व्हाई शुड मनी कम इन द मिडिल? अगर से है तो दो. बट अगर से वो लड़का सिर्फ, मैं देखती हूँ करके डाउरी लेने के बाद भी बहुत सारे पेरेंट्स लड़के के और लड़का भी बार बार उनको फोर्स करता है, स्कूटर दो, गाड़ी दो, ये दो, फलाना दो. दोस आर फकिंग ग्रीडी पीपल. सो ऑल बॉयज हियर, डोंट बी ग्रीडी, ओके. अगर से किसी के पेरेंट्स बहुत पुअर है, उनको टॉर्चर मत करो. ये देखो कि वो लड़की अच्छी है क्या आपके लाइफ के लिए. इट मैटर्स, यू नो, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम वी हैव. कि तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा नहीं रहेंगे तो तुम किससे शादी करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है. तुम क्या एक अच्छे इंसान से शादी कर रहे हो, वो देखना होता है, ठीक है. ओके, बाय द वे, व्हाई एम आई स्टिल ऑन Zoom बाय माय सेल्फ? ओके, 1 सेकंड. एक मिनट, मैं तुम्हारा क्वेश्चन पढ़ूंगी, मुझे ये देखने दो क्या. कहाँ गए हम लोग? ओके ओके ओके, वो आप लड़का कुछ कह रहे थे. अच्छा अच्छा, गॉट इट, आई आंसर्ड इट. इनको दिल देते रहते हैं, किसी को थोड़ा ब्लड भी देना चाहिए. ट्रू. मैं दिल नहीं देता, आई विल डेफिनेटली गिव मैन. दैट्स, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच. दैट वुड बी, यू वुड बी सेविंग सम लाइफ वन डे व्हेन यू बिकम अ मैच. यू नो, हम, मुझे कभी नहीं पता था ऑनेस्टली, टिल, वो बोलते हैं ना, जब तक अपने कोई पास नजदीक के इंसान को नहीं होता तब तक हमको समझ में नहीं आता कि व्हाट इज ऑल दिस. एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड. हमने किडनी ट्रांसप्लांट डोनेशन सुना है, हम ये सब देखते हैं, बट आई नेवर न्यू कि ऐसा होता है और इतना इतना सिंपल चीज है, हाउ इट्स डन एंड ऑल दैट. सो yeah, it would be so good if we can save people's lives.
एंड और कोई क्वेश्चंस नहीं है तो मैं चलूं. एंड क्या नाम है, किसने मुझे वो सिस्टर वाला क्वेश्चन पूछा था. इन केस यू हैव एनीथिंग एल्स प्लीज DM me. And Archana, I waited for your answer but you didn't give, so may I take your leave now? Yeah, it's online. Obviously मैं जकार्ता में बैठी हूँ, ये लोग इंडिया में बैठे हैं. And it's such heartwarming stories. You know, that day we when I attended this session, there was this lady who was talking about her husband who got a bone marrow transplant, and it was so beautiful to hear the story that how he made it. He was going to die and they saved his life. So yeah. अच्छा बच्चा लोग, मैं चलूं, कोई टेक्स्ट करो, बाय बोलो मुझे तो मैं निकलूं. अच्छा हम चलते हैं. क्या मैम आप बस बोलते रहे, सुन के अच्छा लगता है. अच्छा तुम लोग को मालूम है हाउ डिफिकल्ट दिस इज. यू नो, सो यस्टरडे आई हैड टू मेक दिस वीडियो फॉर माय ब्रदर. इट्स हिज 25th वेडिंग एनिवर्सरी. तो मुझे इतनी आदत बन गई है ये करने की, बात करने की. अभी बनाना था वीडियो हैप्पी एनिवर्सरी बोलने के लिए, मैंने 4 मिनट तक भगवान ही जाने क्या नहीं बात की. ठीक है, फिर पहले तो मैंने फिर उसको बहुत बार देखा, फिर मैंने व्हाट द फक एम आई टॉकिंग आल्सो. मैंने इतना फनी चीज, मेरे हिसाब से वो फनी था, पर कोई देखेगा तो बोलेगा क्या क्रिंज वीडियो बनाई है. ठीक है, तो मैंने उसको 4 मिनट कुछ था, तो मैंने उसको 2 मिनट्स 57 सेकेंड से कुछ किया. फिर बाद में आज सुबह को मैंने सोचा, क्योंकि आज डेडलाइन थी, आज देना था, क्योंकि पूरे फैमिली भेज रही थी, तो आज डेडलाइन था. तो मैंने कल रात को काफी देर तक बैठ के उसको एडिट करके भेज दिया. सुबह में मैं दोपहर में मुझे थॉट आया, व्हाट द फक, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा कि मैं कॉन्स्टेंटली बस बात करते जा रही हूँ जैसे कोई पॉडकास्ट चल रहा हो. तो मैंने फिर उसको एडिट करके मैंने सिर्फ हैप्पी एनिवर्सरी वाला पार्ट भेजा. मैंने अपने नीस को बोला, मेरी माँ अगर से किसी को दिखा रही है तो मत दिखा, सिर्फ वो मेरे भाई के, इट्स फॉर हिज आईज ओनली. एंड छोटा वाला तुम लगा सकते हो अगर से पार्टी में, वो जो होता है ना, क्या बोलते रहे उसको, वो क्या है यार, दैट वाइट थिंग. देखो व्हेन यू नीड दैट ब्लेस्ड वर्ड, वो नहीं याद आता. प्रोजेक्टर पे नहीं वो दिखाते, वो वाला द स्लाइड शो एंड ऑल ऑफ इट. सो वो करने वाले. अच्छा बाय कपिल. क्या काता कंपार्ट वाला रहस्य. अच्छा सो गौरव इज आस्किंग मेरे ब्यूटी का राज क्या है. ब्यूटी का राज वैसे तो कुछ खास है नहीं, बट अभी थिंक मुझे लगता है मेरे रेड कलर मुझे सूट कर रहे हैं मेरे बालों के. डोंट यू ऑल थिंक इट लुक्स गुड? आई थिंक इट सूट्स मी रेड. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, जिन जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, रेड है. ठीक है, सो आई थिंक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं अपने बालों में रेड ज्यादा रखूंगी. आई थिंक इट सूट्स माय पर्सनालिटी. वो जो फियर्स पर्सनल, मेरा माय सन सेज आई एम ऑन फायर, बट ठीक है, उसको ज्यादा अच्छा नहीं लगा, बट आई डोंट केयर. वो 11 साल का है, उसको कुछ नहीं पता. स्मार्ट बोर्ड नहीं, वो प्रोजेक्टर उधर लगाते हैं. तो मेरा सीक्रेट कुछ नहीं है यार, जेनेटिक्स है, फिल्टर है, मेकअप है और क्या हो सकता है. या दैट्स जनरली इट. आई कांट टेक टू मच क्रेडिट फॉर इट. रुको, क्या और एक कुछ पार्ट था, क्या था. Money prevails in today's world because there is no intimacy between friends, family. Yeah, we just want pleasure from materialistic thing, being an addict and past and so. Yeah, true, very true. It's changing a lot, unfortunately. Any book young adult must read. नहीं नहीं, मेरा, तुम लोग मेरा पॉडकास्ट देख लो, तुम्हारा सारा नॉलेज यहीं पे है. Sorry, I'm so funny. No, I find myself funny sometimes. तो यू नो आई टेल यू समथिंग, तुम लोग को अच्छा लगता है सुनो. तो मैं तुम्हें वीडियो की बात बता रही थी. तो माय ब्रदर always, like, he's the wittiest person I know, my elder brother. Yeah, so he's the funniest and the wittiest, and you have to be like so fucking careful when you're talking because he picks it like this and he can rag you like literally. वो उसका sarcasm, उसका wit इस इतना स्मार्ट और इतना क्विक है ना, पता नहीं किस पे गया साला. मैं तो उस पे दूर तक नहीं गई हूँ, बट ही डजंट शो दैट साइड टू एवरीबडी. तो वो हमेशा मुझे बोलता है कि मुझे रच्चू बुलाते हैं बाय द वे घर पे. तो देयर आर फ्यू पेट नेम्स आई हैव. सो रच्चू, छो फॉर छोटी दीदी, एंड मॉम एक टाइम पे पेड़ा और लड्डू, पता नहीं किस खुशी में मुझे मिठाई का नाम दिया गया था.
तो वो और RDX, जैसे तुम लोग को मालूम है कि मेरा जनरल नाम RDX होता है, यहाँ पे फ्रेंड्स लोगों ने, पर बचपन से जनरली रच्चू या रच बुलाते, और छो मेरे सारे छोटे भाई बुलाते हैं, क्योंकि छोटी दीदी का शॉर्ट फॉर्म छो। तो मेरा भाई, बड़ा भाई हमेशा मेरे को बोलता है करके, माय गॉड तू जब बात करने लग जाती तो स्टॉप बटन नहीं होता, तो लाइक इट इज हेल्पिंग मी टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर से वो नहीं होता तो तुम लोग किसको सुनते और क्या सुनते? तो in a way there's like a good and bad, it's a bane and a boon to be able to talk so much non-stop. So okay, क्या था? मैम योर सेशन विद फ्रैंक रिच हेल्प मी, आई एम ग्लैड दैट इट हेल्प एक्चुअली। फ्रैंक रिच से याद है, तो उसने, आई डोंट नो इफ यू ऑल सॉ, उसने मेरे बारे में एक क्लिप बनाई थी उसके वीडियो के ऊपर, कि एक इंडियन लेडी, मतलब ऑब्वियसली मैं, और उसको कितने लोगों ने पॉडकास्ट पे इंडिया से बुलाया होगा, तो उसने बोला एक इंडियन लेडी पे आया, तो मैं थोड़ा, मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आया। गुस्सा तो मतलब लाइक क्लैरिफिकेशन देना था, कि बिकॉज उसने जो बोला आई डिडंट मीन दैट, क्योंकि मैं अपना इंडियन कल्चर समझा रही थी कि हमारे इंडियन पेरेंट्स क्यों इसके बारे में बात नहीं करते। तो फिर मैंने उसको, जिन जिनको इंटरेस्ट है जाके उसका वीडियो देख लो, मैंने उधर डाल दिया था और मेरी स्टोरी में भी डाला। तो बट देन he wrote back to me, he wrote there कि no I didn't mean to, wait I'll tell you what did he say, कि I didn't mean to offend you, was that the word that he used, एक मिनट, ऐसा ही कुछ लिखा था। हाँ, he says I agree, हाँ, क्योंकि मैंने उसको बोला कि we all can chip in, why can't, if parents can't do it that doesn't mean हम school college वो सब में नहीं कर सकते। जैसे मैं बात करती हूँ, I'm not part of school and college, Rich is also not part of college। तो उसने लिखा कि I agree with you, I think you misunderstood this post, this is in no way attacking you or your stance, the clip was taken from another podcast I was being interviewed on, and I was using a conversation to demonstrate a point. I'm grateful for what you're doing. My audience isn't as young as yours, so I'm speaking to adults. You said you made an intentional choice about your development and raising your kids, and that's what I'm calling for others to do. मैंने उसको थैंक यू बोल दिया। तो बट उस क्लिप में ऐसा लग रहा था कि मैंने बोला करके पेरेंट्स ने करना ही नहीं। मैंने कब कहा पेरेंट्स ने नहीं करना है? बट हमारे इंडियन पेरेंट्स को टाइम लगेगा, वो ग्रोथ को, वो इमोशनल इंटेलिजेंस को ग्रो होने के लिए। हम अभी भी, मैं इतनी प्रोग्रेसिव माइंडसेट की हूँ, बट फिर भी मेरे बच्चे के सामने, जैसे हम उस दिन कौन सा थॉर वाली मूवी चल रही थी, और आई डिड गेट लिटिल अनकंफर्टेबल, क्योंकि हमको, हमारी कल्चरल अपब्रिंगिंग है कि हम शर्मा जाते हैं, हम स्कैंडलाइज हो जाते हैं। तो वो चेंज करने को टाइम लगेगा। आई एम श्योर मेरी बेटी अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं बिहेव करेगी जैसे मैं कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं एटलीस्ट कोशिश कर रही हूँ, आई कांट से कि मैं नहीं कर रही हूँ, बट कितने पेरेंट्स तो बिल्कुल कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि हमारा कल्चरल पूरा फाउंडेशन ही वही है, hush hush, everything is so hush hush, so yeah। रच्चू दरियानी is a good name। नहीं नहीं छी नहीं, मैम भी नहीं कंट्रोवर्सी क्या है? मैं या ही मिसअंडरस्टूड मी, कंट्रोवर्सी नहीं है, ऐसा होता है, बट मैं जनरली नहीं बोलती लोगों को। बट आई थॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कल्चरल डिफरेंसेस एक इंसान को समझना चाहिए, और हम क्यों, हमारा जनरेशन ऐसा करता है, मेरे पहले वाला जनरेशन ऐसा क्यों करता है, पूरा हम और यूएस ऐसे लाइक लिटरली पोल्स अपार्ट है। तो या अच्छा, और कुछ मैम, और क्या था, और कुछ हाँ, यंग बुक के लिए मैंने तुम्हें बोल दिया। सी आई डोंट रीड बुक्स, सो आई डोंट नो, आई रीड ओनली आर्टिकल्स, एंड अदरवाइज गो चेक अंकुर वारिको, एंड आई थिंक lots of insta people give you all ज्ञान की क्या बुक पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो या अच्छा, अभी चलूं? अभी 9:30 बज गए, मुझे इधर आके कितना टाइम हो गया? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे का स्ट्रीम है, वैसा भी कोई नहीं देखता, पता है हमारा 2-2 घंटे का स्ट्रीम। सो हम 4 लोग बैठे रहते हैं। Okay, ma'am, I did that actually that day after we talked. I shared that incident with my mom after nearly 16 years. I think it is up to us. Yeah, हम भी तो नहीं बात करते हमारे पेरेंट्स से। It's a tough one. अच्छा, स्टडी अच्छा नहीं जाती, 15-10 मिनट रुक जाती। हाँ, सो कपिल, प्रॉब्लम भी ये है ना, मैं तुमको अपने लाइफ का एक स्टोरी बताती हूँ। तो हम लोग, आई थिंक दिवाली का वक्त था, एंड हम लोग क्रैकर्स जला रहे थे। अब माँ बाप ने बोला था कि सुतली बॉम्ब नहीं जलाने का, ठीक है, पर चर्बी बहुत है हम लोगों को, हम वही करेंगे जो हमारे पेरेंट्स बोलेंगे नहीं कर। तो मैंने मेरा बड़ा भाई 2 साल ही बड़ा था, और वो, मैं, सब फ्रेंड्स नीचे थे, और
वो लोग जला रहे थे, पर मैंने बोला नहीं नहीं, मेरे को मुझे भी जलाना है। तो वो मैंने लाया, लगा, ठप करके मेरे फेस में इट ब्लो अप। सो फक, माय होल लिप गॉट बर्न्ड एंड ऑल दैट। अब पेरेंट्स को कैसे बताया? नहीं बता सकते क्योंकि उन्होंने गुस्सा करते, राइट? सो अभी व्हेन यूर अ पेरेंट, तुमको समझ में आता है कि तुम्हारे पेरेंट्स गुस्सा क्यों करते हैं। जब तुमको कुछ बोला होता है, साला मत करो तो मत करो ना, तो तब वो अक्ल नहीं होती। तो जाके फिर नेबर को, यू कुड ट्रस्ट योर नेबर। तो आई वेंट टू द नेबर्स हाउस एंड उन्होंने फिर हल्दी वल्दी लगाई एंड ऑल। फिर ऑफ कोर्स फाइनली दे फाउंड आउट, बिकॉज ऐसा नहीं करके सारा दिन अपना मुंह कवर करके घूमते हो। तो एक वो इंसिडेंट था। फिर दूसरा इंसिडेंट ये था कि मैं पता नहीं कौन, मेरे को एज याद, मुझे अपनी एज याद नहीं। तो हमारे, हम लोग एक 1 बेडरूम किचन में रहते थे, राइट? तो सब कुछ लाइक वाज लाइक क्लटर्ड एंड ऑल दैट। तो एक दिन क्या हुआ कि हम लोग हाइड एंड सीक खेल रहे थे उसी छोटे घर में। तो मैं बेड के नीचे घुस के छुपने गई, ठीक है? अब किसको पता था वहां पे आयरन पड़ा हुआ है, गरम गरम आयरन। अभी तक मेरे को थाई पे मार्क है, ठीक है? इतना जोर से वो लगा जब मैं अंदर घुसी, वो इस तरफ पड़ा था, या मुझे याद नहीं, ठीक है? बट आई रिमेम्बर द स्कार, आई रिमेम्बर समथिंग वेग। बिकॉज जब बड़ी हुई तो मैं मॉम से बात कर रही थी, शी सेड हाँ तूने कितने टाइम के लिए नहीं बताया। फिर हम देखते थे तू लिम्प करके। तू हमारी अपब्रिंगिंग देखो ना, हम हमारे पेरेंट्स हमको इतना ब्लडी डरा के रखते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स बताते नहीं अपने पेरेंट्स को। फॉरगेट हैविंग बॉयफ्रेंड प्रॉब्लम और व्हाटएवर, पॉर्न एडिक्शन प्रॉब्लम और ड्रग प्रॉब्लम और व्हाटएवर, हम बात नहीं करते। तो मैं एवरी अदर मंथ, आई टेल माय सन, बिकॉज ही इज ओनली 11 नाउ, आई नो उसके प्रॉब्लम्स अभी स्टार्ट नहीं होने वाले। तो हर टाइम मैं उसको बोलती, राइट, यू कैन टॉक टू मी, राइट, आई विल लिसन टू एनीथिंग यू हैव टू से, राइट? सो दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स। एंड हमारे घर में झूठ बोलना अलाउड नहीं है बच्चों को। ऐसे आई रादर हियर द ट्रूथ फ्रॉम यू रादर देन अ लाई। तो जो तुम चुतियापा करते भी हो, आके हमको बताओ, सो दैट वी कैन सपोर्ट। लाइक अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा इशू हुआ मेरे बेटी के लाइफ में, फ्रेंड्स के बीच में। कुछ उसने बोला, कुछ उसने बोला, कुछ ये हो गया, और मैं देख रही थी मेरी बेटी बहुत रो रही थी काफी दिनों से। एंड ऑफकोर्स जो स्टोरी सुनाता है वो हमेशा अपने आप को दिखाते हैं कि वो कितने सही होते हैं। जब तक तुम सामने वाले से बात नहीं करते, बोलते अरे यार हमारे बच्चे ने भी चूतियापा किया है, तो अभी उसका क्या किया जाए। तो I had to actually intervene, which her friends didn't like, but I did. And I asked my daughter, I said, are you sure that you want me to interfere in this one? Because I can see you're very sad. I can see you're crying. I can see that you're so distressed. Now, कुछ भी उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, because people were ganging up against her. And I said, you have me on your side. Whether you make a mistake, whether you are right or wrong, doesn't matter. I will take your side. सो जब मैं कॉल पे गई और सब बच्चों के साथ बात किया, पता चला काफी हद तक मेरी डॉटर वाज आल्सो एट फॉल्ट। जो ये एज में होता है यार, हम लोग सब ने किया है। और मैं उनको भी बोला करके, तुम कौन से दूध के दूल्हे हो जो तो ऐसे बिहेव कर रहे हो उसके साथ। सो ठीक है देन, बट बिफोर आई वेंट ऑन द कॉल, आई आस्क्ड माय डॉटर, आई सेड, आर यू श्योर टू लूज योर फ्रेंड्स? बिकॉज दिस इज गोइंग टू मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स विल नॉट एक्सेप्ट कि व्हाई हैव यू लेट योर पेरेंट्स इंटरफियर इन। पेरेंट्स मतलब मैं ही ये सब चीजों में करती हूँ। तो she said yes, I'm fine. And yes, as I expected, वही हुआ। क्योंकि most of her friends alienated her after the parents interfered. But उसके बाद वो खुश भी थी, पता है? क्योंकि finally एक इस तरफ और इस तरफ का उसको समझ आ गया। And of course I made her apologize to this, क्योंकि कोई और पेरेंट होता, जनरली क्या होता है, पेरेंट्स जो बीच में पड़ते हैं अपने बच्चों का साइड लेकर बोलते हैं कि नहीं तुम सही हो। तो मैं बोल रही तुम्हारे फ्रेंड्स गुस्सा क्यों हो रहे? ऐसा नहीं करके मैंने उनको कुछ ज्यादा बोला, मैंने उल्टा अपनी बेटी को बोला टू अपोलोजाइज। एंड आई टोल्ड हर व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट एंड व्हाट यू शुड बी डूइंग एंड ऑल ऑफ इट। बट स्टिल, सो आई वाज जस्ट वंडरिंग, मे बी आई एम टू फकिंग नाइस, मे बी आई शुड हैव बीन लाइक द अदर पेरेंट्स, राइट? कि अपने बच्चे का साइड लो और बाकी बच्चों को बुरा। एंड आई डिडंट इवन डू दैट। आई वाज ट्राइंग टू लिसन टू बोथ द साइड्स एंड एक्सप्लेनिंग द साइकोलॉजी बिहाइंड कौन क्यों क्या करता है। तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा बोला होगा तो तुमने चलो गुस्से में बोला, या इसने ऐसा किया तो रिजेंटमेंट में किया, या तुम्हारे बारे में अगर से उसने बोला तो शी वाज प्रोटेक्टिंग यू। तो इनको ये बेसिक इमोशंस नहीं पता कि हम हमारे बात करने में और हमारे एक्शंस में कुछ चीजें होती है, हम क्यों करते हैं। देयर इज लाइक डिराइव, देयर इज अ रीजन बिहाइंड, अंडरलाइंग रीजन बिहाइंड व्हाट यू डू, राइट? तो मैंने ये सब समझाया। और ऑफ कोर्स फास्ट फॉरवर्ड टू नाउ, वो जो दोस्त उसके छूट गए, तो मैंने बोला ठीक है यार। और तुम लोग भी ये समझो कि लोग आएंगे, लोग आपके लाइफ में जाएंगे, उनको पकड़ के मत रखो। अगर से वो आपको वैल्यू नहीं करते,
और मुझे लगता, और फिर बाद में उन्होंने बोला करके नहीं तूने ठीक से सॉरी नहीं बोला। अरे ठीक से सॉरी नहीं बोला मतलब क्या होता है? माँ ने तेरे को उसकी माँ बैठी है, वो माँ उसको डांट रही है या उसको बोल रही है सॉरी बोलने को, बच्ची है यार, इतना नाटक क्या करें? तो मैंने उसको बोला यू नो व्हाट, यू डिड योर जॉब, नाउ बैक ऑफ। इफ दे आर सो एरोगेंट देन वो तुम्हारे लाइफ में वैसे ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छे दोस्त वो होते हैं जो एक सामने वाले दोस्त का दर्द समझते हैं, और वो जब सॉरी बोलते हैं उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए, ऐसा नहीं करके आके मेरा पैर पड़ो, ठीक है, समझ जाओ कि वो इंसान बुरा फील कर रहा है, और छोटी छोटी बातों में अपनी फ्रेंडशिप्स को तोड़ो मत। तो आई जस्ट टोल्ड हर, आई सेड इट्स ओके, अगर से दे डोंट रियलाइज व्हाट एक्चुअल फ्रेंड्स शुड बी डूइंग। क्या तुमको क्या लगता है बड़े लोग में नहीं होता? हमारे लोगों में भी, बड़े लोगों में गॉसिप वॉसिप होता है, पता चलता है, बुरा लगता है, कन्फ्रंटेशंस होते हैं, कभी कभी फ्रेंडशिप्स टूट जाती है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, राइट? सो दिस इज व्हाट आई डू जनरली। तो हाँ, तो मैं तुम्हें बता रही थी कि I'm trying to change my mindset that I'm not like my parents, and I do talk to my children whenever possible. But having said that, मुझे 100% पता है कि अगर से मेरा बच्चा, like when my daughter started dating and all, it was not easy to deal with it, because I come from that generation to अपना पूरा वो ना दिमाग का बर्तन जैसे साफ करना होता है और एक नया चीजें उसमें फिल करनी होती है। इट्स नॉट इजी, क्योंकि वो पूरी तरह से वो बर्तन कभी साफ नहीं होता, क्योंकि इतनी सारी तुम्हारी लर्नड बिहेवियर्स, इतने सारे कल्चरल कंडीशनिंग जो होती है इंडिया से आती है, तो वो हमको चेंज करना है। तो आई होप दिस करंट जनरेशन, यू पीपल आर वाचिंग सच अमेजिंग पीपल एंड यू विल चेंज द वे यू डील विथ योर ओन चिल्ड्रन। आई डोंट नो, मैंने चैट देखी नहीं, मैं बात करते जा रही हूँ एज यूजुअल। ठीक है, क्या था, कहाँ थे? ओके, एक मिनट। ओके, मे बी बीसी, आई एम 28 नाउ एंड मैच्योर है। ओ मे बी बीसी नहीं, गाली नहीं दे रहा, बिकॉज बोल रहा है, ठीक है। क्या क्या करोगे जाके, क्या करूंगी, 10:30 बज रहे। ओके, 15-20 मिनट फिर कोई देना क्या क्या 15-20 मिनट फिर कोई कह देना मत जाओ, एंड देन सर्कल, या एग्जैक्टली। नहीं 3-4 आवर्स, पागल है मैम। कभी कभी इंटरव्यू के टाइम बोर नहीं होता क्या? नहीं, एक्चुअली मैं बताऊं क्यों नहीं होता मुझे, ठीक है। देयर आर सो मेनी टॉपिक्स आई डोंट नो, राइट, एंड आई एम ऑलवेज फैसिनेटेड। कभी कभी वो गेस्ट इरिटेट कर देते हैं, कभी कभी गेस्ट तुम्हें समझते नहीं, कभी कभी वो तुमको अज्यूम करते हैं, और मैं नाम नहीं लेना चाहती, एज यू नो आई डोंट लाइक कंट्रोवर्सी। तो बट आई हैव गॉट सम गेस्ट, either they have rubbed me the wrong way or I have rubbed them the wrong way, or they have come with a preconceived notion, and it's not gone like the best of podcasts, but it's okay. I learn from everybody. I respect everybody's profession, everything that they have to say. Like आज जब मितेन थे तो मुझे कुछ चीजें नहीं समझ में आई, लाइक वो जो हार्मोन की बात मैंने सुने हुए हैं, बट इतना डीप नॉलेज नहीं है ना फिजिकल हेल्थ में, इतना किसको पता। तो या आई नथिंग बोर्ड्स मी लाइक दिस, लाइक जस्ट इमेजिन पागलों की तरह अपने आप को स्क्रीन पे देख के जो इंसान बात कर सकता है, ठीक है, नॉन स्टॉप, तो सामने वाला जब होता है तुम कैसे बोर हो सकते हो? तो आई ऑलवेज से इफ यू आर नॉट गुड कंपनी टू योरसेल्फ, हाउ कैन यू बी गुड कंपनी टू अदर्स? एंड बिकॉज आई फाइंड नॉलेज वेरी फैसिनेटिंग, या अनलेस वो कुछ ऐसा सब्जेक्ट, सपोज कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर आके मेरे को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने लग जाए, पक्का मैं बोर होंगी, वो उसका तो पक्का है। या कोई मेरे को मैथ सिखाने की कोशिश करे, बहुत लोगों ने कोशिश की और वो हार चुके हैं। तो लाइक सिंपल थिंग्स की, जब मैं रेस्टोरेंट बिजनेस में गई थी, मेरे को परसेंटेजेस, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कुछ भी नहीं आता था, मतलब अभी आता है तो कोई पूछना नहीं। तो आई वाज लाइक फक, एज सून एज दे स्टार्ट टॉकिंग ना, माय माइंड गोज ब्लैंक। एंड ऑफ कोर्स पता नहीं क्यों, बट हमारा पूरा इंडियन, सारा नहीं पर काफी हद तक ऐसी कंडीशनिंग है कि जिस इंसान को मैथ्स नहीं आता वो इंसान गधा है, और मुझे इससे बहुत इरिटेशन होती है। लाइक हम जब कुछ खेलते भी हैं या समथिंग, और कोई ज्यादा बेटर, तुमसे ज्यादा जल्दी फास्टर कैलकुलेशन कर ले, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं भी अपने दिग्गज हूँ अपने अपने चॉइस ऑफ टॉपिक्स में। तो मुझे नहीं, दैट इज अ प्रॉब्लम, आई थिंक एक माइंडसेट प्रॉब्लम होती है। हमको लगता है जो साइंस लेते ज्यादा स्मार्टर है, जो मैथ्स करते ज्यादा स्मार्टर है, बाकी हम सब क्या है फिर? तो वो मुझे, आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दैट काइंड ऑफ thought process. I think we're all unique and amazing in our own ways, and we have value to add in lots of ways. So yeah. हाँ, तो हम कहाँ थे?
हाँ, इंडियन पेरेंट्स लॉजिक, अगर रोया तो चांटा, अगर चांटा पड़ा और नहीं रोया तो फिर एक चांटा, अगर गिर गया तो फिर एक चांटा. Yeah, it's very strange. I remember one day I didn't go to school. I hid myself in the wardrobe. Acha, okay. They were scared looking for me. Later, mom came to take my clothes and found me sitting there. Oh yeah, oh my God, yeah, they must be scared. I'll tell you, this happened with me also when my son was I think my son was, but very young, very very young. I think he was only 2 years old or something. तो कबड़ में जाके bloody hell बैठ गया. I can't tell you how stressed. So we were like, आर्यन 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 पागलों की तरह चिल्ला रहे. नीचे गए, सीसीटीवी, मैंने उनको बोला सीसीटीवी देखो ये वो, और बाद में मेड फोन करते हैं, मैम वो कबड़ के अंदर बैठा. आई एम लाइक, ओ माय ब्लडी गॉड. तो गुस्सा भी आ रहा था, रिलीफ भी था. मतलब तेरे को अरे कब से 2 साल का था या 3 साल का था, इनफ टू टॉक. आई कांट रिमेम्बर, आई डोंट थिंक 2 साल का था. 2 साल में इतना नहीं बात करता था, पर इतने बार हर रूम में जब इंसान चिल्ला रहा है, साला जवाब दो ना. तो आई कांट टेल यू हाउ आई तो वर्स्ट केस सिनेरियो, मेरा बेटा घूम गया, अब कभी नहीं मिलेगा, एंड ऑल दैट ड्रामा. So I can completely understand where your parents are coming from. You see, हमको कभी रियलाइज नहीं होता माँ बाप और बच्चे का जो बॉन्ड होता है ना, जो एक पेरेंट होने के बाद ही हमको समझ होता है इतना प्यार दूसरे इंसान से कैसे कोई कर सकता है. Only when you become a parent you understand. It's so unique, that kind of love. Exactly, Gaurav. And ma'am goes on. Yeah, ma'am, watch 3 blue 1 brown, you love maths. है ये क्या 3 blue 1 brown क्या है यार, तुम लोग ऐसे ऐसे चीजें लिखते हो, एक्सप्लेन भी नहीं करके. 3 blue क्या कोई यूट्यूब चैनल है? 1 क्या ब्राउन, वो क्या होता है? मेरा बेटा मैथ्स में बहुत अच्छा है. ओह अच्छा, is a math YouTube channel created run by, okay, the channel focuses on teaching higher mathematics and visual and छोड़ यार, हायर लिखा हुआ है हायर मैथमेटिक्स. मेरा जो मैथमेटिक्स का लेवल है ना, जो आई थिंक आई वुड से किंडरगार्टन के आगे नहीं जाता, तो वो अपना 2+2 4 तक ठीक है. मेरी टेबल्स में मैं भूल चुकी हूँ, तो गलती से. और तुम लोग को तो कभी नहीं सुनना है कि मैं हिंदी के नंबर्स कैसे बोलती हूँ, मुझे हिंदी के नंबर्स भी नहीं आते. तो लेट्स नॉट गो देयर. हम लोग इसी में ठीक है, हम अच्छे हैं, ठीक है. एक्चुअली ये अच्छे वाली चैनल आपने मुझे बताई, आई विल गिव इट टू माय डॉटर, क्योंकि उसको भी मैथ्स करती है. ओके, क्या था? हाय सचिन भट्टी, लॉन्ग टाइम नो सी. ओके, आई एम मैथ मेजर बट आई डबल चेक माय मल्टीप्लिकेशन. चलो अच्छा, या दैट्स नॉट अ बैड थिंग इफ यू डू, दैट्स ओके, इट्स ओके. सो अच्छा, व्हाट मैम यू व्यूज ऑन Shushmita Sen controversy? काय का controversy यार, वो she's a grown woman, he is a grown man, hardly 10 years difference. ऐसे कर रहे हो जैसे पता नहीं. ठीक है, सुना है कि वो उसने कुछ एक्टिविटीज अच्छी वाली नहीं की थी, पर अपने को क्या लेना देना यार, उसकी मर्जी, उसको डेट करना है करने दो, मेरे पास टाइम नहीं है. आई एम सॉरी. ऑल्दो मेघा टोल्ड मी दैट आई गिव अ Sushmita Sen vibe, like fears and all. She's not here today. That day she wrote a text to me, so not that I am going to get involved with a what Modi is he? Not Nirav Modi, right? What is his name? I have no clue. I'm so bloody clueless. Okay. Ma'am, आप कहाँ से हो? Hi Ayush. Ayush, by the way, I have had many clients with the same name. So I'm not sure. Maybe there's so many Ayush. So where am I from? मुझे कहा गया कि मैं दूसरे प्लैनेट से हूँ, क्योंकि मैं इतनी एंजेलिक हूँ. सॉरी, ज्यादा हो गया ना, मजाक कर. थोड़ा लाइटर नोट पे बोलना चाहिए एक इंसान. आई एम इंडियन बट आई हैव बीन अब्रॉड फॉर 30 years. I was in Hong Kong for 4.5 years and 25 years in Jakarta, and I'm moving to Dubai. But मेरी Indian origin है, born and brought up in India for 18 years. Sorry, 20 years in India. I was born in Lonavala. My parents are, my father was Sindhi, my mother was South Indian. मुझे दोनों की language नहीं आती. I'm more proficient in English and Hindi. Marathi भूल चुकी हूँ. So that's my, and if any other questions you can ask me, but that's my simple and
short answer about who and where I am from. Ma'am, it's bhatti, not it's not it's bhatti, not bhatti. अरे I don't know यार, है ना अभी जो है, अभी मैं भट्टी भट्टी से I don't know, मेरे हिसाब से दोनों सेम हुए। ओके, हाँ, ललित मोदी, यस। मैं पता नहीं अपना, पता नहीं कौन सा, बट यार अपने को क्या करने का है, रहने दो ना, खुश। अभी देखेंगे कब तक लास्ट करे आप। आई मीन मेरे को क्या देख के, मेरे पास और भी टाइम लाइफ में नहीं है कि किस कौन कितना देर लास्ट करता है। सो ऑल दिस लाइक मैंने पढ़ लिया, एंड आई रियली लाइक सुष्मिता सेन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। I find her so fierce. I love the way she talks and how she has like just the right amount of IQ, EQ, and the style. And you know, of course, she's very Bengali है, not all Bengalis, but ये वाली तो मुझे पहले से more than ऐश्वर्या राय हमेशा सुष्मिता सेन ज़्यादा अच्छी लगी, and she's done such a wonderful job of raising her daughters. Although one thing I didn't like. When I was reading something about her and someone says she gave gift of life to the 2 children. Yeah, ठीक है, she adopted them, yeah, but जब वो बच्चे adopted हो, surrogacy से हो, खुद के biological बच्चे होते हैं, it doesn't fucking matter वो कहाँ से आए, वो तुम्हारे life का part है, और तुम्हारे life में तुम कोई charity नहीं कर रहे हो, ठीक है? तुम एक बार उनको प्यार करते हो, उसी तरह से करते हो। मुझे तो लगता है कि कभी-कभी अभी जो लोग ऐसे लोग चीजों में बिलीव करते हैं कि तुम्हारा बच्चा कहीं खो गया था और वो तुमको कहीं से मिल गया, so that's how I look at adoption, that they, and I hope all of y'all will, if you ever adopt, don't adopt till you're ready, don't adopt till you don't love them like your own children, and don't look at it like you've done some fucking charity and some great shit. तुम इसलिए करना चाहिए क्योंकि तुमको उन बच्चों से प्यार हो रहा है। और मुझे लगता है जिस इंसान का इतना दिल बड़ा होता है ना, नथिंग लाइक इट, कि तुम किसी के लिए कुछ कर रहे हो, पर ऐसा मत सोचो कि कुछ दान पुण्य का काम कर रहे हो इसलिए किसी बच्चे को तुमने अडॉप्ट किया। करो क्योंकि तुम एक इंसान को अपने लाइफ में, वो भी तुम्हें प्यार करेगा, आप भी उसको प्यार करोगे। सो इट शुड बी लाइक दैट। So I didn't like that when they said that she changed lives. Yeah, okay, she did something unique for an Indian woman who's not married, but don't make the children feel like, you know, they are some charity case. थोड़ी that should not be the way. क्या आप हमें अडॉप्ट कर लो, तुम लोग ऑलमोस्ट अडॉप्टेड ही हो सच में देखा है तो। एक मिनट यार, मेरा लिप ड्राई हो रहा है। क्या हाँ मैम, तुम्हाला मराठी येते बट like see this is my Marathi accent, and look at the limited Marathi this I know, मला येते तब, but जब you don't know 2 languages well, this is what you do, you end up speaking the languages. I'm speaking in Bahasa now. मैं तापी बोल रही थी, तापी is but in but as in the sentence, not your but बट बोलने की कितनी आदत है। तो या मला येते, एंड आई हैव फॉरगॉटन को क्या बोलते, मी विसरले हाउ टू स्पीक मराठी कसे, how to speak Marathi. See, if I go to Bombay, leave me for like a month or 2, I think I'll pick it up. मुझे समझ में आती है, पर मेरी मराठी ऐसी हो गई है, लाइक टूटी फूटी। तो when my sister, mother and I are together, and हमको मराठी में कुछ बोलना है, क्योंकि बाकी लोगों को या तो हिंदी आती है या अंग्रेजी आती है, तो हम लोग मराठी में बात करते थे, ठीक है। तो मेरी मॉम और सिस्टर तो इंडिया में रहते, मेरे भाई लोग भी उधर ही रहते, मतलब 2-3 भाई उधर रहते, 2-3 बाहर रहते। तो जिनकी प्रैक्टिस है मराठी की, उन लोग इतना हंसते थे, रचू प्लीज मराठी में बोल, and then like please stop, don't even try it. So it's become that bad, and my husband तो makes कितना मजाक उड़ाते हैं मेरा मराठी का। पर मी एक दिन, या आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है। भाती भाती अच्छा भाती अच्छा ओ फक, मेरा चेयर लग गया। ओ अच्छा, नॉट भट्टी, भाती। अच्छा, तो किसने बोला तेरे को ऐसा स्पेलिंग लिखना? ऐसा स्पेलिंग लिखना तो इंसान बोल भी सकता। अभी इसको बनाओ अपना सरनेम, तो इंसान को प्रॉपर में समझे, भा एंड ती, नॉट भट्टी। तो ठीक है, गलती किसकी? तुम्हारी। स्पेलिंग गलत किसने लिखा? तुमने। प्रोनाउंस मैंने गलत किया,
कैसे गलत किया, क्योंकि तुमने गलती की, तो ये फिक्स करो, जाके पासपोर्ट वासपोर्ट में सब जगह नाम चेंज कर दो, ठीक है. तो वॉच अ वीडियो अबाउट अ टीनेज बॉय misbehaving with her in the way she handled, yeah, she's too cute, yeah. Hello ma'am, how are you doing? Hello रतन साहू, तुम्हारा नाम कभी पढ़ा नहीं, साहू पढ़ा है, रतन नहीं पढ़ा हुआ है. क्योंकि और एक साहू है जो मेरे सब्सक्राइबर्स में. हेलो मैम, हाउ आर यू डूइंग? आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट आर योर पर्सपेक्टिव ऑन ओवरटर्निंग. नहीं, आई एम नो. हाँ, अच्छा, अबॉर्शन वाला ना, मुझे तो बहुत इरिटेशन होती है, मुझे तो कुछ ज्यादा ही इरिटेशन होती है. देखो, द प्रॉब्लम इज दिस, ठीक है, कि एक इशू ये है कि अगर से एक औरत प्रेग्नेंट होती है, और मैन का भी सेव होना चाहिए, क्योंकि अगर से उसका बच्चा है तो क्यों नहीं होना चाहिए, बट अगर से रेप हो रहा है, अगर से कोई अंडर एज है, कोई बच्चा नहीं चाहता और बाय मिस्टेक हुआ है, एंड दे से कि कितने वीक्स तक, आई थिंक 4 वीक्स या नॉट 4 वीक्स, कितने 8 या 10 वीक्स तक वो फीटस ही होता है, उसको कोई समझ नहीं होती, कुछ फर्क नहीं पड़ता 3-4 महीने के बाद, आई थिंक. तो either which ways, if someone, if it's an unhappy mother, if the mother is not going to love the child and it's an unwanted person on this planet, so why bring it in on the planet? If you cannot care for the child, it's such a huge responsibility. किसी को समझ में नहीं आता. बच्चा पैदा करना शायद ज्यादा इजी है, पर उनको रेस करना पूरी जिंदगी, मतलब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 18 साल तक या जब तक उनकी शादी होती तब तक नहीं होती. एक बच्चा तुम्हारे साथ जब तक तुम जिंदा हो, तुम्हारी वो प्लेजर, तुम्हारा ड्यूटी, तुम्हारी लाइफ होती है. क्योंकि मैं तो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती, अगर से मेरे बच्चे हैं, इवन जस्ट बिकॉज दे गेट मैरिड, क्या वो मेरे बच्चे नहीं रहे? इफ उनको कोई तकलीफ होगी, मुझे नहीं होगी. तो टू रेज देम, टू गिव देम अ गुड क्वालिटी लाइफ, that's why when I see these very poor beggars also having 4-5 बच्चे, I'm like, wow, तुम तो फंसे पड़े हो इसमें. तुम एजुकेशन नहीं दे सकते बच्चे को, तुम भी उसको रट में फंसा के रखा है. फिर भी वो दूसरों को देखते हैं और उनको भी लगता होगा कि यार, खाना नहीं है, छत नहीं है, पढ़ाई का अपॉर्चुनिटी नहीं है. तो दैट इज वेरी सैड, आई फील, क्योंकि इट्स सच अ responsibility to have a kid, to raise them, to give them a good education, good medical facilities. आप अगर से शताब का अपनी कम्युनिटी पोस्ट पढ़ा, उसका लास्ट लाइन क्या था? इतना पैसा कमाओ कि तुम्हारे माँ बाप को तुम अच्छा हॉस्पिटल दे अगर से वो बीमार पड़े. ये भी तो होता है ना, कि जब तुम्हारा बच्चा बीमार पड़ता है, यू डोंट वांट टू टेक देम टू अ प्लेस वेयर देयर इज यू कैन नॉट गेट देम गुड ट्रीटमेंट. सेम अप्लाइज की एक बच्चा जब बड़ा हो जाता है, अगर से वो संभाल सकते तो पेरेंट को संभालना चाहिए मेरे हिसाब से. I am also very Indian, but I'm not expecting that out of my children, to be very honest with you. हम उसको सिखाते तो है, but we don't know if they will or not. But having said that, for me, it is so important that I give I won't say you have to be like an Ambani or something to give your children. वो ज़्यादा हो गया. But एक basic जो चीजें होती है, education, good medical health insurance and toys and some ट्रिप्स एंड स्टफ लाइक दैट, जो बेसिक चीजें होती है, वो एक पेरेंट को देनी चाहिए मेरे हिसाब से. तो हैव अ चाइल्ड ओनली व्हेन यू आर फाइनेंशियली equipped, and also when you're emotionally ready. You don't want to have a child when you're not emotionally ready. And of course, when it comes to rape and all that, so there is no fucking way that you should have a child out of a fucking rapist. That's such a stupid thing to do. मतलब अपनी पूरी जिंदगी, unless the woman says कि नहीं, ठीक है, I want to have a child, and doesn't matter even if it's through a rape or whatever. But otherwise, I don't believe कि एक कि abortion नहीं करना चाहिए या something like that. I'm not in favor of that. वैसे भी planet पे कुछ कम लोग हैं क्या? Already इतने सारे, अभी उस पे भी तुम रोक लगाओगे, और लोग क्या करेंगे? यहाँ वहां जाके करवा के आएंगे या गलत तरीके से कराएंगे. वो डेंजरस है. it's a woman's body, she will be taking I don't know what not. और कितने सारे टीनेज प्रेगनेंसीज होते हैं, वो भी मुझे लगता है उसका तो पक्का नहीं रखना चाहिए बच्चे को. इतने छोटे बच्चों के बच्चे होंगे, कैसे चलेगा यार, कैसे उनको देखा जाएगा? सो या दैट्स माय टेक ऑन दैट वन. ओके, और क्या था? मैम आपकी एज कितना है? जैसे आपने बोला 30, आई एम 51 दिस ईयर. क्या लिखा है? सो मैम आप मराठी मध्ये I know, I told you it's bad. I mean, now you know how bad. गुरकी पंजाबी बोलो.
मेरी पंजाबी इतनी गंदी है, आई कांट टेल यू, like my I have so many Punjabi friends, like as you can see I'm not a language person. So पंजाबी में मेरे को मुझे सिर्फ आई लव यू बोलने आता है, पर मैं किसको बोलूं? ठीक है, वैसे तुम लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हो तो आई गेस उसको बोल सकते हैं, क्योंकि जनरली आई लव यू बोलते हैं, मैंने देखा है लोग जो यूट्यूबर्स होते हैं आई लव यू बोलते थे, तो बट नहीं, ये तो एक लवर के लिए हुआ ये डायलॉग मैंने मूवीज में देखी है, इसलिए मुझे आती है कि मैं तेनू प्यार कर दिया, एक वो, ठीक है, हाँ, तू खोता है, समथिंग लाइक, आई थिंक मींस डोंकी, राइट? असी घर घर समथिंग, okay, see, you don't want to hear me speak Punjabi also. All the Punjabis, they're going to just like say, क्या बात कर रहे, प्लीज चुप हो जा। तो मैं, हाँ, नहीं, मेरी बात श्वेता से नहीं हुई। मैंने उसका पोस्ट देखा है। आयुष मैम, आपकी एज मैंने बता दिया, 51। आपको देख के ज्यादा उम्र दर नहीं, आई डोंट लुक 51, दैट्स व्हाट इवन माय फ्रेंड्स से। I guess genetics and makeup and fitness and good mental health, that makes a lot of difference when you're happy as a person and you're like your entire mindset not see, जो इंसान ना कुड़कुड़ करता है, नेगेटिव होता है, पेसिमिस्टिक होता है, सारे टाइम स्ट्रेस लेता है, उसकी शक्ल से नजर आती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि तुम्हारा माइंडसेट अच्छा हो। एक्चुअली अगर से नहीं होता तो मैं यहाँ बैठी भी नहीं होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स लाइक ब्लाइंड फोल्डेड, रीडिंग द ब्लाइंड फोल्डेड वाली बात होती। तो हाय युवराज, हाय अगेन, मैं तो गई भी नहीं युवराज वापस भी आ गए। ओके मैम, डोंट यू गेट बैक पेन? आई डोंट गेट बैक पेन, आई गेट स्टिफनेस इन माय शोल्डर बिकॉज आई हैव अ स्लिप डिस्क इन माय नेक एंड माय बैक। इनके मैंने तुम लोग को मेरे कार एक्सीडेंट के बारे में थोड़ा बहुत बताया, तो तब से मुझे होता है, तो मुझे थोड़ा स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है, बट मैं आज मैंने ऐसे ड्रेस पहनी कि प्रॉपर्ली स्ट्रेचिंग भी नहीं हो रही, ठीक है। क्या कैंडी हुंडी सी, क्या क्या क्या, व्हाट डज इट मीन? नो पेन नो गेन, ओके, हाँ। जिस दिन आप लाइव आते हो हमारा दिन बच जाता है। आई एम सो हैप्पी कि किसी का तो दिन मैं बनाती हूँ, बिकॉज जो 15 लोग मुझे देखते हैं, एक्चुअली बहुत लकी हो तुम लोग, पता है कि जब तक मैं बहुत फेवरेट पता नहीं ऐसा कभी होगा कि नहीं, बट आई एम जस्ट, तुम लोगों को तो मालूम मुझे मस्ती करने की बहुत आदत है यार। व्हाट डज इट मीन कैंडी हुंदी सी, मतलब I don't know what the fuck it means, but okay, divided by language, united by BC is Bakchodi, I'm guessing. Okay. Say I know these words, but it could be because also. So I don't know. Or it could be that other gali also. So I don't know. और की कर रहे हो तुसी, हाँ, ये मुझे आता है। So I can read it, but I'll reply in English कि हम क्या कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, but उसको पंजाबी में कैसे बोलते हैं पता नहीं। ओके, तुसी मत ही बोलो पंजाबी विच हिंदी यार, नॉट फेयर। एक्चुअली तुम लोग को एटलीस्ट एंटरटेनमेंट हो रहा है, राइट, मेरे ऐसे पंजाबी बोलने से और मराठी बोलने से। हर्ष, अरे हर्ष तुम्हारा नाम कभी पढ़ा हुआ नहीं, हर्ष पढ़ा है बट बोरा नहीं पढ़ा है, तो हर्ष बोरा, थैंक यू सो मच मैम फॉर ऑल योर एफर्ट्स टू मेक अस बेटर। माय प्लेजर, गॉड ब्लेस यू। तुसी बहुत सोने हो, हाँ, ये मालूम है, ये मुझे मालूम है, थैंक यू, बट ये वाला मुझे पता था। वो भी गाना ना, कौन सा, समथिंग सोने दी, हाँ, बेबी डॉल में सोने दी, हाँ, हम लोग उस पर डांस करते हैं, तो मुझे पता है इसका मतलब क्या है वैसे। तो अच्छा, और क्या था, किधर गया यार चैट, कोई धूम ही आ रहा है। हाँ, क्या था, मैम रिपीट आफ्टर मी, अच्छा रिपीट, सीरा कराता क्या होता है? शी यूज्ड टू से, ओके, व्हाट, अच्छा, इट मींस दैट, इज इट? यार तुम ऐसा वैसा कुछ बोलने मत लगाओ जो मुझे समझ में नहीं आता है, और फिर यूट्यूब स्ट्राइक ना हो जाए, कुछ ऐसा वैसा पटांग मैंने कुछ बोल दिया। ओके, क्रिश बोरा, ये कितने सारे बोरा है, हर्ष बोरा भी इधर है, ये दूसरा नया क्रिश बोरा, कंप्लीटेड 6 months of 6 किलोमीटर वॉक डेली टुडे, वाओ यार, मेरे से 4 हो जाता है। या ट्रेडमिल पे आई थिंक कितना 35 मिनट्स 45 मिनट्स में 4 हो जाता है, मतलब इतना स्लो चलती हूँ, तो सोचो। तो she was telling कैंडी हुंदी सी मीनिंग है, आई डोंट नो, गाना है, अच्छा गाना है, अच्छा यार तुम लोग बहुत कंफ्यूज करते हो। मैम इंस्टा यूजर ने मेरा वही सेलिब्रेट विद रचना, इतना कुछ दिमाग वाला नहीं, और सेलिब्रेट है, सेलिब्रेट नहीं है, सेलिब्रेट का मतलब पार्टी वार्टी करना, एंजॉय करना, और सेलिब्रेट का मतलब सोचना, इंट्रोस्पेक्ट करना, तो 2 डिफरेंट वर्ड्स है। ओके, अच्छा, इट मींस शी यूज्ड टू से, व्हाट यूज्ड टू से, बट व्हाट वाज आई सेइंग? देखो ये प्रॉब्लम है, कनेक्शन नहीं होती है। हाँ, सिद्धू मूसावाला के गाने सुने पंजाबी 1 महीने में सीख लोगे, नहीं यार, नहीं, टाइम कहाँ है। हाँ, टाइम से याद आया, 1 मिनट पानी पीने दो।
So टाइम से याद है कि मैंने आजकल थोड़े नेटफ्लिक्स देखना स्टार्ट किया, तो मैंने एक सीरीज देखी, मुझे शॉर्ट वाली अच्छी लगती है क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता, तो सेफ देखा, और अभी मैं स्ट्रेंजर देख रही हूँ, इंटरेस्टिंग था। डू यू नो हरियाणवी, अरे देवा परमेश्वरा यार, वैसे ही मेरी हिंदी और सॉरी मराठी और पंजाबी में मेरे इन्होंने ले लिया हरियाणवी, तो मैंने मेरे मेरे कजन जाट लोग हरियाणवी भी बोलते हैं ना, आई एम गेसिंग। सी मेरी ज्योग्राफी हिस्ट्री, लाइक तुम लोग को you'll be surprised, तुम लोग जितना मुझे जानोगे तुम लोगों ने पता नहीं मैम इधर बैठ के क्या कर रही है, तो मेरी ज्योग्राफी इतनी खराब है, मैथ्स भी खराब है। चलो ठीक है, मैं इंसान अच्छी हूँ, वो एक अच्छी बात मेरे में। नो आई डोंट नो, तुम कुछ बोलो फिर मैं रिपीट करती हूँ। सीरा कराता मीन्स एक्सेलेंट। अच्छा अच्छा, आई डिडंट नो दैट। ओके, सो आई एम एक्सेलेंट, सो हाउ डू यू से रचना एज यू सी आई एम सो मॉडेस्ट, यू सी। तो मेरे को भी आती है पंजाबी भी। हाँ, तूने बोला पंजाबी मत बात कर स्टडी सिंह, तो तुम्हें पंजाबी आनी चाहिए, क्योंकि एक इंसान को बोलने के लिए कि यू डोंट स्पीक पंजाबी, तुमको इतनी अच्छी आनी चाहिए। हरवानी भी आती है मेरे को। अच्छा ठीक है। प्रखर मेड 47 वीडियो। ओ आज, अच्छा लगा दिया। दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू वॉच, आई मीन देखते हैं। हाँ कुछ तो आया है। ओके, गुड बाय। ओके, मैं बाद में देखकर, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी अपना। हाँ, मैं आई कैन सी जस्ट रिलीज देखकर हम लोग यार, लेट हिम बी, लेट एवरीबॉडी बी, ठीक है। कहंदी हुंदी चंद तक क्या लिख रहे, गुरकीरत सर के ऊपर से जा रहा है। या जाट स्पीक्स आना, सी दैट, थैंक गॉड एटलीस्ट आई गॉट वन थिंग राइट। अटैक ऑन टाइटन ड्रॉप कर दिया क्या? हाँ ड्रॉप कर दिया, बहुत टाइम लग रहा था। और क्या प्रॉब्लम क्या है पता है, उसको देखना पड़ता है। ये बाकी सब चीजें इंग्लिश होती है तो तुम सुन के भी अपना काम कर रहे हो, पैकिंग कर रहे हो, तुम लोग को मालूम है मुझे नेक्स्ट मंथ निकलना है, तो लाइक यू डूइंग योर थिंग। बट और बाय द वे 31st को एटिकेट, हम लोग क्या करने वाले, डाइनिंग एटिकेट पे एटिकेट कोच आ रही है, तो गेट रेडी टू लर्न द प्रॉपर डाइनिंग एटिकेट्स। ओके, आई एम प्रॉपर पंजाबी लिविंग इन पंजाब सिंस बर्थ। अच्छा ओके, वेरी गुड गुड। प्रखर ने पे लिया सर, यार यार छोड़ो ना यार। हाँ, I lives in Punjab, so full on Punjabi. I lives in Punjab, पंजाबी। I lives in, पूरी गलत इंग्लिश है गौरव, अनलेस तुमने डेलिबरेटली लिखा है। अच्छा अच्छा, तो हम चलते हैं, अभी जाऊं, हो गया कि नहीं? 3 घंटे से बैठे हुए यहाँ पे ऑलमोस्ट। यार किधर गया चैनल? ओके हाँ। हाय मैडम, आई डोंट नो व्हाई माय ब्रदर इज स्पाइंग यू, आई डोंट नो हिज इंटेंशन, इज 5 years younger। स्पाइंग मतलब क्या, तुम्हारा फोन वोन चेक कर रहा है? व्हेन डिड आई क्राई लास्ट टाइम? अर्चना, लास्ट टाइम भी मैंने तुम्हें पूछा था क्या, एक काम करो ना, डीएम करके पूरा एक्सप्लेन करो ना, मैं तुम्हें समझाऊंगी। और 5 years younger क्यों कर रहा है? अनलेस ही इज लाइक irritated with you and that's why he's spying, and I think maybe you're not there on the stream and I already said if he's protecting you then it's okay, but होता है यार भाई बहन का कभी कभी लड़ाई झगड़े में, ताकि माँ बाप को बताए एंड कीप प्रूफ कि तुम उसको तंग करोगे तो वो यूज करेगा, तो ऐसा भी होता है। तो आई डोंट नो व्हाई। ओ इट्स ओनली 2.5 hours, थैंक यू सो मच। किसने पूछा when did you cry last time while watching a film? I cry every single time, thank god I didn't cry in वो कौन सा थॉर, आई डोंट थिंक आई क्राइड देयर। तो मेरे बच्चे बहुत, मुझे, मैं स्पाइडरमैन में रोई थी, कितना मेरा इज्जत का कचरा किया मेरे बच्चों ने, पता है कि हाउ कैन यू क्राई इन सब। जो वो आंट गुजर गई थी उसकी, अभी तो टाइम में, अभी तो ये वार्निंग नहीं, ये नहीं है ना, स्पॉइलर अलर्ट नहीं देना पड़ता ना, क्योंकि काफी टाइम हो गया। कब रोई थी? मूवी में नहीं रोई, पर मैं लास्ट वीक रोई थी, लास्ट वीक नहीं, 9th को रोई थी लास्ट। क्यों रोई थी? क्योंकि मेरा फेयरवेल चल रहा था और मुझे स्पीच देने बोली, मैंने माइक लिया था, तो उससे थैंक यू टू एवरीबॉडी। साला रोने लग गए बच्चे की तरह, उधर छोटे बच्चे की तरह, लिटरली फूट फूट के रोई। तो मेरी एक फ्रेंड बोलती, यू क्राई आल्सो? लाइक I'm like, yeah, I am extremely emotional. I cry at Hallmark ads also. I can cry at everything, damn thing. So that came like people know me as this person who's so fierce and like so straightforward and like bold. People don't realize I cry very easily. So which is a good and a bad thing, I guess. So एक मिनट,
एक मैसेज है। ओके, हम लोग एक बच्चे की कैंसर की आई सर्जरी करा रहे हैं, मतलब मैं नहीं, मतलब मेरा जो चैरिटी ग्रुप 6 साल से मैं चला रही हूँ, तो वी हैव डिसाइडेड टू हेल्प अ चाइल्ड। ओके, बाय कपिल। अर्चना, आई थिंक ब्रदर से एक बार पूछना पड़ेगा कि आप, यस करेक्ट, हाँ, ओके 15-20 मिनट और। ओके, आप जैसे लोग रहेंगे तो नेगेटिविटी जैसा कुछ नहीं रहेगा। थैंक यू आयुष, मैं आपको उतना अच्छे से जानता नहीं हूँ, बट आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आपको भगवान हमेशा ऐसे ही जवान और खुश रखे। थैंक यू आयुष, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, एंड तुम खुश रहो। कभी लाइफ में कोई इशू हो तो यू नो यू कैन ऑलवेज कम टू मी। और क्या, फिर मैं भी निकल जाऊंगा वॉक के लिए। जाओ, अभी जाओ, सब लोग जाओ और मुझे भी जाने दो। बाय मैडम, तुसी दुबई नहीं जाना सीगा? यस 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 सीगा। I will be going on, I'm leaving, we're trying to book on 8th of August, so that will be my, yeah मैम। बट रियल सेशंस को थोड़ा लेट शुरू होता। हाँ, हमारा तो आजकल यही हो गया है यार, पॉडकास्ट के लिए तुम लोग कम आते हो, मेरे व्यूअर्स पॉडकास्ट के बाद ज्यादा आते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, पॉडकास्ट बंद कर दूं क्या? I had not cried since years, but recently crying watching films. I feel very, हाँ, क्योंकि अंदर थोड़ी like all the time, see, बहुत रोना भी अच्छी बात नहीं, बिल्कुल रोना, like of course some people never cry, which is okay, but it's so therapeutic, right? Releases all that. मैं आज भी रोई थी। actually तुम लोग को मालूम है, मैं हर बात पे रो सकती हूँ, like मेरा तो like I had to learn in time to switch off this tap. Of course I don't cry at everything, but I, you know what I mean, कि मैं कुछ चीजें मुझे बहुत इमोशनल करती है, कुछ चीजें एक टाइम पे करती थी, अब नहीं करती। So yeah, I have grown and I have this केसेस पे, रिसेंटली किसी केस पे मैं रोई क्या? नहीं, अभी लेटली कोई ऐसा केस नहीं आया। हाँ, पर मैं, हाँ, तुम लोगों को कुछ, मेरा रैंट खत्म नहीं हुआ ना। किसी ने मुझे उस दिन लिखा कि मैंने, यार ब्लॉक करने से साला मैसेज चला जाता है, वो इरिटेटिंग पार्ट है। तो क्या हुआ था कि ये बंदे ने मुझे लिखा, और मैं सबको बताना चाहती हूँ, ये स्टॉप आस्किंग मी फॉर मनी। एक तो खुद इंसान पैसा नहीं कमा रहा है, तुम लोग मेरे से मांग, किसी ने कुछ गलत ट्रेडिंग कर ली या कुछ, तो दैट पर्सन इज सेइंग, और and I love this, okay? So he writes to me and then he starts with ma'am something. Then he's got this entire paragraph where it's written sir something. मतलब साले गाली दूं क्या? मतलब घोंचू, दिमाग तो लड़ा, कॉपी पेस्ट क्यों कर रहा है? किसी से अगर से कुछ मांग रहा है, वो उस इंसान का सर तो निकाल, मैम लिख, नहीं लिखना एटलीस्ट वो निकाल दे। पूरा सर मतलब कहीं से कॉपी पेस्ट करके चिपका दिया कि मेरे प्रॉब्लम हुए थे। फिर बाद में नेक्स्ट सेंटेंस लास्ट वाला, मैम 10,000 मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। तुमको क्या लगता है मेरे पास बहती हुई नदियां हैं पैसे की, कि मैं, तुम लोग मेरे को जब मांगोगे तब मिल जाएगा? तो क्या हो गया है? और अभी वो तुमने रिसेंट स्कैम देखा, वो जो हार्वर्ड स्कूल वाली, वो ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने डाला, क्या उसका न्याय तमाशा बन गया है कि apparently they didn't check it properly, and those 2 pages where people were donating to her, and now they found out that this girl has been showing different places she's raised and whatever, and they've found out that it's actually a scam. तो यार, लोगों को पैसे के लिए स्कैम मत किया करो, और मेरे से तो प्लीज पैसे मत मांगो। तुम लोग जब मुझे लिखते हो कि जॉब चाहिए है या तुम्हारा कुछ डालना है, कोई बिजनेस कर रहे हो, if you're like really troubled, can help you little bit over there कि इंस्टा पे स्टोरी डाल दी या something like, please don't ask me for money, please stop it. और हाँ, और एक रैंट करना था, तो एक नहीं, काफी बार मेरे साथ ऐसा होता है, ठीक है? तो लोग जो मुझे काउंसलिंग के लिए लिखते हैं ना, मुझे, मैंने उस दिन डिस्कॉर्ड पे भी कहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जनरेशन की प्रॉब्लम है कि क्या प्रॉब्लम है, कि तुम लोग को मैनर्स और एटिकेट नाम की चीज नहीं है। नो, हेलो मैम, प्लीज मे आई हैव अ अपॉइंटमेंट, थैंक यू मैम फॉर गिविंग योर टाइम। अभी कल भी, आज एक बच्चे को मैंने लास्ट मिनट अपॉइंटमेंट दी थी आज की, क्योंकि उसने बोला मैम प्लीज मेरे को आपसे बात करनी है, तो मैंने बोला ठीक है आज फोन करो, और उस इंसान ने मुझे कॉल नहीं किया। और मुझे इतना गुस्सा आता है ना कि एक तो अपने संडे को ये करके कॉम्प्रोमाइज करके, बिकॉज यू रोट मैम मैं बहुत रो रहा हूँ, मैम इतनी तकलीफ हो रही, मैम मेरे से बात करो। ठीक है, इंसान आपके लिए टाइम निकाल रहा है, फकिंग शिट, वैल्यू दैट यार। आई एम गिविंग यू माई
like time without even charging you. You don't have the etiquette to tell me कि you are busy, you can't call, ये वो. मैं बोल रही हूँ अच्छा मैं ये टाइम पे मैंने अपने फ्रेंड को बोला सॉरी आई कैन नॉट कम आउटसाइड. मैंने ऑलरेडी संडे को मैंने एक तो बोली पर तू संडे को तो यू सेड कि संडे को एक दिन काम नहीं करेगी क्योंकि पॉडकास्ट होता है. बहुत थक जाती हूँ. घर से मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, पॉडकास्ट करती हूँ और उसके बाद क्वेश्चन आंसर. आई एम लाइक मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड. तो देन आई सेड नहीं अब मैंने ये अर्जेंट केस था तो मैंने और आज एक अर्जेंट केस आया था तो उसको थैंकफुली वो बात नहीं करना चाहता. मैंने वॉइस नोट से सॉर्ट आउट कर दिया. टचवुड इट्स आई होप that it has helped, and he said that you've helped me in one of the worst times of my life and I'll always remember you. अरे remember करो नहीं करो please and thank you and यार थोड़ा politely मेरे से sessions मांगा करो. Don't act like you fucking like मैं तुम्हारी slave हूँ या servant हूँ या staff हूँ या तुम्हारे payroll पे हूँ. At least उतना तो करो. और दूसरा एक था कि एक तो manners वाली बात थी और एक कुछ बोलना था मेरे को. मैं पूरा एक्चुअली स्नैपशॉट निकाल के रखा था, भूल गए. हाँ, जिसने मेरे से नंबर्स मांगते हो और बिना मेरे को फॉलो किए, बिना मेरे को प्लीज थैंक यू फेवर वाला कुछ भी मांगते हो. और एक था जिसको मदद चाहिए था और इसको मैंने पहले भी मदद किया था. उसने मेरे को अनफॉलो किया. ठीक है, अब मेरे को फिर से फॉलो करके मेरा एक इनटेक फॉर्म होता है तो मैंने नोटिस, ऑब्वियसली सिंपल चीज नोटिस तो करते हो तुम कि अचानक ये बंदा इनटेक फॉर्म कैसे आ गया. तो उसने भरा और फिर मैंने इसको बोला गिव मी योर ईमेल ताकि मैं तुम्हें रिसोर्सेज भेज दूं क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है यार हर पर्सन को कॉपी पेस्ट इतने सारी चीजें करके कॉपी पेस्ट करो. तो मैंने एक ईमेल सेट पैटर्न बनाया है कि ये भेजना है इस प्रॉब्लम के, ये भेजना है उस प्रॉब्लम के लिए, वो भेजना है ये हिप्नोसिस ऑडियो के लिए, ये वीडियो उसके लिए, ये एक्सरसाइजेस के. मेरे को बोलता है आप यहीं भेज दो. मैंने सीन करके छोड़ दिया. अगर से तुम यू कैन नॉट ट्रस्ट मी दैट मच, डोंट इवन कॉन्टैक्ट मी. तुमको क्या लगता है मेरे पास इतना फ्री टाइम है कि सबको कॉपी. मैंने फर्स्ट फ्यू मंथ्स वैसे किया और मैं थक गई थी. to always every client to give different resources. Now they are like compiled in a such a way कि अगर से एडिक्शन का कोई है, पढ़ाई का कुछ है, ओवर थिंकिंग का है या सेल्फ वर्थ का है या एंगर इश्यूज है, जो भी है, I have set it in like such a way for me it is convenient to send via email. Otherwise I'll have to copy paste everything and post it. It's so difficult. Fuck off यार, नहीं देना मैं ईमेल, जाओ करो किसी और को ढूंढो और किसी और से ले लो काउंसलिंग. मेरे को मत तंग करो. या तो एटिकेट दिखाओ और जिस तरह यू सेंड इट हियर ओनली, तेरे बाप की नौकर लग के गई है कि यू सेंड इट हियर ओनली, जाओ नहीं देती. तो अच्छे इंसान को भी पुश उतना मत करो कि वो इंसान कि तुमको ध्यान ना दे. इट्स नॉट दैट आई डोंट वांट टू हेल्प बट you people just treat me like shit man sometimes. I'm like मैंने ज्ञान भी पेला. आज जिस बंदे ने मेरे को नहीं बोला, सॉरी वॉरी नहीं बोला या प्लीज थैंक यू नहीं बोला, I said don't write to me like this. I said I don't like it. I've left you on scene because of that. I said after helping you so much and you have said that I've helped you so much and again you need my services. ठीक है, एक बार तो मैं वैसे चार्ज नहीं कर रही but second time third time if you're coming to me at least be grateful कि it's made a difference and I'm there for you when you. मेरे को अर्जेंट अपॉइंटमेंट चाहिए, ठीक है, I'll try to move around my appointments if it's. But where is the please? Where is the thank you? Why are you expecting I owe you? I said I wrote this. I said this generation is full of entitled children. क्यों तुम लोग को लगता है I owe this to you all? मैं तुम पे मेहरबानी कर रही हूँ rather than नहीं मैं तुम पे तुम लोग मेरे पे मेहरबानी कर रहे हो. सॉरी गलत बोल दिया. तुम लोग मेरे पे मेहरबानी कर रहे हो मेरे पास आकर. नहीं यार, जस्ट रिस्पेक्ट दो इंसान को, और कुछ नहीं कर सकते. चाहे वो पैसा रिलेटेड हो या ना हो, इट डजंट मैटर इफ समवन इज चार्जिंग यू और नॉट. जस्ट रिस्पेक्ट द पर्सन who you're approaching if you need anything. That is the sign of being classy. That is called then if you don't have that, you're bereft of class. अच्छा मेरे को मैसेज किसका है? अच्छा मेरे फ्रेंड का मैसेज आया. एक सेकंड, सॉरी मैं चैट तो बिल्कुल पढ़ ही नहीं रही थी. नहीं अरे आई एम नॉट एंग्री. अरे यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग. सी मैं तुम लोग को नहीं बोलूंगी तो किसको बोलूंगी, और जो लोग कर रहे हैं वो सीखेंगे कैसे? सो आई एम नॉट एंग्री. इट्स पार्ट ऑफ माय प्रोफेशनल जर्नी. बट if we don't talk about it, how will we make change? So you should know me better than this. मैं अपसेट हो जाती हूँ, मैं इग्नोर कर देती हूँ और मैं 2 सेकंड में आई कैन लेट गो द मैटर. टचवुड वो
इतनी स्ट्रेंथ है मेरी, जो पावर जो है ना वो एक अलग लेवल की है, तो तुम लोग समझोगे नहीं, बट यस इट्स जस्ट दैट। मैं तो हमेशा मैम प्लीज चेंज योर कैमरा, क्यों मेरे कैमरा को क्या हो गया, ये क्या हो गया, अच्छा क्या मेरे कैमरा को क्या, ये नॉर्मल जूम कैमरा, मैं क्या कर सकती हूँ इसको, बस भाई मैम के घर, क्या घर कैम कम लोग हैं उनको लैंग्वेज पे चिढ़ाने को जो हम भी चिढ़ा रहे हैं। इट्स ओके, ओके बाय मैम, आप भी थक गए होंगे, अरे कोई जाने देगा आयुष, तो मैं जाऊंगी ना, क्या ज्वाइन करो, आपसे सीखो बहुत कुछ, ओके यस श्योर, लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू मैम, मुकेश अंबानी का नंबर भेज दो, नहीं मैम आई कैन ऑटोमेट ईमेल्स फॉर यू, नहीं ऑटोमेट नहीं करना है मुझे, दैट इज ओके, दैट इज द रीजन आई डोंट डू emails, because I can only do emails for that other reason, but aren't you the one who gave me the Google Drive idea? But there's a reason I don't, because I find it more convenient for doing it via Insta. Nah, you had told me, right, you are the one. But नहीं भाई, एक जोक सुनाओ ना, because your name is Kapil Sharma. अच्छा, that's a good, actually मेरे को realize नहीं हुआ, हाँ कपिल शर्मा, तुम कपिल शर्मा जैसे करते हो कि नहीं कॉमेडी? नहीं नहीं, मुझे ऑटोमेट नहीं करना, मुझे ना, even I know how to make all these Google forms and all, there's a reason I don't do it, it's very simple, I'll have to otherwise do it everything on email, मेरे को इतना सब कुछ email पे नहीं चाहिए, chat पे it's better, मेरे लिए तो सारा time it's so cluttered, the email, I prefer chats, easier to look for the person also, क्या वो क्या कर रहा है, so yeah, अच्छा अभी मैं चलूं, अभी काफी देर हमने चिट चैट की, ठीक है, अपना ध्यान रखो, प्लीज मुझे जाने दो। मोहित कुमार तुमने ऐसे क्यों करा, प्लीज चेंज योर कैमरा, आज तक किसी ने मेरे को कैमरा की क्वालिटी के बारे में कुछ नहीं कहा, और लाइटिंग तो इस रिंग लाइट है, इससे ज्यादा बेटर लाइटिंग क्या हो सकती है, आप थोड़ा ज्ञान पे लेंगे कि प्रॉब्लम क्या है आपको हमारे कैमरा से, हम तो 1 साल से यही कैमरा यूज कर रहे हैं, और नहीं मेरे को लॉजिटेक वाला कैमरा तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, मुझे अपना जूम वाला ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे तो लगा सब क्लियर है कि नहीं, स्टडी सीन क्लियर है ना, भाई बेटी बेच के अमीर हो गए क्या है, क्या, ए युवराज ये क्या लिखा है तुमने, ओके, am I the one who doesn't find this funny or have I misunderstood his joke? बेटी को क्यों बेचेगा, unless you mean खेती, because that doesn't make sense. ना मैम 12 मिनट और दिन 3 hours, oh my god, I hope people kidding me. मैम रिंग लाइट से आईज पे स्ट्रेन नहीं होता, नहीं मैंने क्या किया है पता है, रिंग लाइट नॉर्मली लोग क्या करते हैं, रिंग लाइट इधर सेम लेवल पे लगाते हैं, मैं इतना ऊपर, मेरा रिंग लाइट इधर आसमान के ऊपर है, तो सीधा मेरे आईज पे नहीं आता, इट्स गोइंग दैट वे, दैट्स व्हाई यू माइट फाइंड इट नॉट सो ब्राइट, so I can't take it. And वो by the way वो ब्लू वाला जो तुम लोग चश्मा बोल रहे थे, ब्लू ब्लू क्या ब्लू समथिंग, वो it's the research says is pointless, so don't even tell me. I'm inside joke है रील कपिल शर्मा से, ओ अच्छा अच्छा ओके, आई डोंट नो, वो बेचारा उसने अपने बेटी बेची क्या, आई डोंट थिंक सो यार, ऐसा किसी के बच्चे पे नहीं करते जोक, ठीक है, बाय सचिन, एक मिनट, सचिन भाटी 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 राइट, हाय M001, कैसे हो, लॉन्ग टाइम नो सी, तुम यही थे कि अभी आए, हो गया स्ट्रीम, हो जाएगा स्ट्रीम, क्या हो जाएगा स्ट्रीम, अच्छा 12 मिनट हमने रुकना है, ठीक है हम रखेंगे, बाय सचिन, मैंने करेक्ट से प्रोनाउंस किया ना, हाँ मैम डू यू नो अबाउट, या आई नो अबाउट हिज मॉम, आई एक सेकंड ना, एक मिनट, क्या था, बाय, हाँ या आई नो अबाउट हिज मॉम, आई, मेगा इज ज्वाइनिंग नाउ व्हेन आई एम लीविंग, मेगा की एंट्री क्या होती है एकदम, सो I pray that his mother gets well soon. God bless her. Hi Megha, how are you? Hi ma'am, I'm good ma'am. How are you ma'am? I am good. तुम तब भी आते हो जब मैं जाने के लिए Ma'am, actually I got late today. Just now I opened my phone and I saw you and then I joined. Okay. Yeah, I got late. 3 घंटे हो गए इधर बैठे. Yeah. As I usual. forgot to join. Sorry ma'am. It's okay. I just didn't How's the realize that studies it's going? fine. Yeah, it's going fine ma'am. Okay. And ma'am, how is everything on your end? Everything is fine. Thank you. एक मिनट मैम, स्पेक्स पहन के दिखाओ, स्पेक्स कौन, मेरे रेगुलर स्पेक्स कहाँ है यार,
हाँ यहाँ ही है। हाँ अच्छा स्पेक्स पहन के भी दिखाओ, मैं रेगुलर चश्मा पहनती हूँ, ब्लू वाला नहीं है मेरे पास। अच्छा इसने क्या लिखा है, मैम गुड इवनिंग, आई हैव अ प्रॉब्लम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन स्टडीज, आई कांट फोकस मोर देन 15-20 मिनट्स, आई ट्राइड। तो पोमोडोरो भी तो 25 मिनट बोलता है आपको, कैन आई सेंड, send, don't send me, send your email, but either which ways, even if you can do 20 minutes, 20 minutes of, अच्छा जिसको चश्मे में देखना है, मैं चश्मा पहना है तो you can see the ring light, देखो वहां से आ रही है उसका। तो मैं ये कह रही थी यार मेरे को ठीक से नजर का को नहीं आ रहा है। हाँ तो मैं ये कह रही थी क्योंकि आप अगर से 20 मिनट भी क्वालिटी पढ़ाई कर रहे हो, दैट्स आल्सो बेटर देन डूइंग लाइक जीरो, राइट। एंड धीरे धीरे थोड़ा पुश करो, 25 मिनट कर लो, ब्रेक लेके 5 मिनट ब्रेक के बाद वापस से 20 मिनट करो। So what is the big deal? Who has told you that you have to sit for hours on end? सबका अपना अपना स्टाइल पढ़ाई का होता है, अपना अपना स्टाइल करने का होता है, तो जरूरी नहीं करके आपको वो करना है जो दुनिया कर रही है। If you can study even for 20 minutes, break it down, and I hope that you will be, more consistent. As long as आप छोड़ते नहीं हो उसके बाद, ठीक है। और yeah, you can send me an email, I'll tell you what to do. Ma'am, can you invite Major Vivek Jacob? ये कौन है? एक मिनट, ये कौन है? आप उनको थोड़ा ढूंढने दो। एक तो तुम्हारी मैम जो है ना, ऐसे दुनिया से नाता तोड़ के बैठे, ऐसा लगता है कि लोगों के नाम भी नहीं पता। देखो ओ ऑन कॉम्बैट, ओके, बैकग्राउंड स्टोरी। अच्छा अच्छा, इंस्टा है क्या उनका? ट्विटर है? एक तो मैं ना एक बार रिसर्च करती हूँ फिर भूल जाती हूँ, बाय द टाइम आई मूव ऑन। इसको ढूंढेंगे, इनको ढूंढेंगे कहाँ? इनका तो ट्विटर है, और ट्विटर पे मैसेजेस जाते हैं क्या, तो पता नहीं। ओके नेवर माइंड, अच्छा बाद में हम देखेंगे कौन फाइट कर रहा बाबा। आप उनके स्ट्रीम में कोई फाइट नहीं करने का है, ठीक है। तो Ma'am, हाँ बेटा बोलो। yeah. Ma'am, once you said that that public speaking coach Aman Shukla name was there, no? You अमन said शुक्ला, that हाँ। he'll just keep on coming on our session and he'll be guiding us all. So after that he never come. I think he came in just one session, no? Yeah, Ma'am? and then second time he sent his people, and then I think we had agreed for 2, but it happened only because he sent his people. Now I don't want to ask for favors, to be very honest, and he's very busy with his classes, so So I didn't contact him so again. now there is no possibility that he'll come, ma'am. You can contact him. He's very cheap, yaar, mega. Uska sessions, I must say, for the quality he gives, is not so expensive. His courses are very, and I recommend to everybody. Really like his style. थोड़ा पैसा खर्च करो और उसके actual courses attend करो, ठीक है? Okay, ma'am. No, actually, that day when he came, he just interacted and just gave some tips. So Yeah, and then he said कि मैं फिर से आऊँगा. So I thought then कि he शायद. told me he's very busy, so he sent his people. Second one, he sent his people. Maybe you didn't attend at that time. Okay. They were also pretty good. We had fun that evening also. Yeah, yes, Yeah. ma'am. Okay, stand क्या? अब भाई बोलो जोक, तो स्टैंड तो ले लो, क्या है पता नहीं यार। एनीवे तुम लोग कैन यू प्लीज स्टॉप इट। हाँ यश, अच्छा यश तुम्हारा नाम कभी नहीं पढ़ा है। 100 यश अनभोरे, माय प्लेजर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। हे बीएस मैम, 6 दिन अच्छे से पढ़ने के बाद एक दिन ब्रेक ले सकते? ऑफ कोर्स लेना चाहिए, ले सकते हैं क्या, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे माइंड को ब्रेक चाहिए। और कचरा चीजें मत करो, ऐसा नहीं करके ब्रेक ले रहे हो ड्रग्स करने के लिए नॉलेज। अच्छा वाला ब्रेक लो, म्यूजिक, meditation, exercise, going on a trip, going on a hike, spending time with your family, cooking, pottery, whatever you enjoy, badminton खेलो, कुछ भी करो, enjoy करो, ठीक है। How I find new guest every week, पता नहीं मुझे, अगर से वो उनका वाइब अच्छा लगता है, कुछ लगता है कि तुमको किसी तरह से मदद करते हैं, लिख देती हूँ। पर कितने लोग पढ़ के रिप्लाई नहीं करते। Should I learn cooking? Everybody should learn cooking, not just girls, guys also. You will need it later in life, because हर टाइम तुम ऐसा नहीं सोच सकते कि it is like a women's chore, ठीक है। And you have to do it also. 100K तुम लोग शेयर कहाँ करते हो? 100K क्या होगा? Anyway, 100 तो दूर की बात है, 100 भी अपना, सॉरी 10K कहाँ होगा? तुम लोग ना सब लोग अपने, सब लोग कोई किसी मैम को शेयर नहीं करना चाहते, इसलिए मैम का कोई भी कंटेंट शेयर नहीं होता। That is my take on why my subscribers stay there where they are. मजाक कर रही हूँ, it's okay. At least हम लोग को चांस मिलता है बात करने का। Of course यश, बाद में हमें भी भेजना अपनी डिश। Yeah, you should learn to cook. It's fun. जिनको अच्छा लगता है, there
most chefs are men, right? So what's wrong with learning cooking? मुझे तो समझ में ही नहीं आता. हमारे तीनों chefs जो हमारे restaurant में थे guys थे. और क्योंकि women generally घर पे बनाते हैं, पर men also cook very well. So there's nothing wrong with it. और खुद को ही खिलाना है और अपनी गर्लफ्रेंड को भी खिलाना, खुश हो जाएगी. बीवी बच्चे वो भी खुश हो जाएंगे. अच्छा, अब मैं चली, प्लीज 3 घंटे के ऊपर हो गए. अगर से वो कम भी दिखा रहा है, ज्यादा भी दिखा रहा है, आई रियली डोंट केयर. आई नीड टू गो. आई बीन सिटिंग हियर फॉर 3 hours. Okay, ma'am, one last question I have. Yes. Ma'am, once you said that you're doing that soft skill wala course, so ma'am, that got completed or is still going on? कोर्स खत्म हो गया, ठीक है. पर मैंने उसका कोई, मैं प्रेजेंटेशन, मेरा नेक्स्ट वन इज ऑन जर्नलिंग टिप्स एंड टेक्निक्स. ओके. And there is a etiquette coach coming on 31st. Now the best part is she and I both went to ICPI. Okay. So मैं उनसे बात कर रही थी, टीना वाले उनका नाम है, तो वो आ रहे हैं 31st को. She is going to do dining etiquette. So I thought rather than me just teaching this, I can get some different etiquette coaches because she's really good at what she does. And that topic is really wonderful, ma'am. Like something different from the thing which is going on in our channel. And I'm going to do a couple of sessions with Tina. Because we were talking, we had a call yesterday or day before, and so she was telling me, "और क्या करना है तुम बोलो, I'll be there for you." So that was very sweet. So she said we'll do dining and business etiquette साथ में. And और एक for girls we have not done any grooming, right? Kya colors and all that, right? So we're going to do that also. And one more thing we discussed, याद नहीं आ रहा, but we're going to brainstorm. And I was just telling her, confidence पे. Like I told her, because everybody's take on confidence is very different, and how to work on yourself and how to present yourself. So it would be nice to learn from her. She seems she's got very good following, and she's doing she's got a store also in Delhi and all that. So I think it will be a nice podcast. So the next one is on 31st, because मैंने सोचा था next week I wanted to call one particular guest, but he's busy. So we'll see. तो मैं हर वीक कैसे लेके आती हूँ मुझे नहीं मालूम. हर वीक तो नहीं होता. मैं I'm going to slow down a bit because I see you silly people, you prefer talking to me and you barely attend my podcast. Podcast के बाद सब लोग आ जाते हैं, राइट? हम लोग इतने घंटे, फिर 1 घंटे में गेस्ट चला जाता है, 2 घंटे तो हम लोग बात करते हैं. तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. आई फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग. दिस आई नेवर एक्सपीरियंस दिस, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो. अच्छा मैम, अच्छा प्लीज मुझे अभी जाने दो. आई नीड टू गो फ्रॉम हियर. इसके बाद मैम, हाउ टू बी इमोशनली स्टेबल इन लाइफ. आई मीन लाइक अभी इमोशनली स्टेबिलिटी पे इतना अच्छा वीडियो डाला है, प्लीज जाके देखो. मेरा सबसे रिसेंट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, that's my and the other one is overthinking wala jo pura presentation hai, that is on emotional stability, but it's a longer version. You have to learn the fundamentals and you have to learn the tips and techniques how to handle your stress and anxiety, and that's how you become emotionally stable. Okay ma'am, do a session. Acharya Prashant. Okay ma'am, mental strength, special forces, mindset, conquering the mind. Okay fine, I'll try to find how to find him. Yeah, if anybody knows his email or something, just write to me, because I can't find anything. I just see him on Twitter. Generally लोगों का इंस्टा होता है, इनका इंस्टा नजर नहीं आ रहा. मैम 2:58 मिनट, बस 3 मिनट और हर बात बोलोगे क्या मतलब. और and the best part is you people want me to constantly talk. Do you all realize कोई इंसान 2 घंटे बात कर रहे हो, तुम लोग टेक्सटिंग कर रहे हो, तो थोड़े लोग इधर आके बात करो ना. जूम पे लिंक दिया है, कम टॉक टू मी. जैसे मेगा कैसे आती है हमेशा, मेगा, गौरव, राज, ये 3 लोग तो पक्का आते हैं. बाकी तुम लोग पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हो. आओ मेरे से बात करो. हाँ मेगा बोलो. Yeah, I got late today. That's what I just didn't realize that session is going on for 3 hours now. Yeah, we had someone for fitness today. So yeah, and I'm planning to go on. The best thing, I think the best thing about your channel is that like continuously you're giving the quality content, which is not happening with other channels, because they are just in the rush of like uploading content without seeing that whether they are producing like quality content or not. But you are focusing on quality and not numbers. That is, I think, the USP about you now. That you are not. पर तुम देखो मेगा, जो लोग ये भी नहीं कर रहे अभी तक, अगर से for you this is quality content, but looks like it's not, because otherwise a lot of people would be following me. Because I'm also reading the mindset of today's generation. They want
spice, they want mirch masala, they want ऐसे कि you know, especially men follow men. Now I'm seeing, although quite a few of my viewers are men and my counseling clients also men, I see that people love these kind of guys who are like, you know, they're role models, you know. And that's why they grow like this. There is nothing, they don't, it's not like they're teaching presentation skills or, you know, soft skills or thinking skills or every topic. By now, if any other guy was doing this channel would have blown up, you know. Same thing I've realized. Yes, ma'am. Yeah, so it's to do with one, the gender. Okay, it doesn't matter quality hai ki nahi. It's like the boys are looking for the boys to emulate and to look up. You know, abhi studies. Like, even yesterday you were saying that people are having this thinking that how can I follow a girl giving gyan something. So they're having some ego clash or something. What is like, but whomever I interact with, I just tell them about you, like you're giving such nice content, like whomever I speak with or whomever I'm friends with now. Like mostly I've told people that you are producing such kind of content, but I'm not sure how many of them have followed you, but it's like many really people don't like to, you see, it's that thing also na Megha, कि counselor mental health, मतलब कोई मुझे कहेगा स्टिग्मेटाइज करते हैं. हाँ, स्टिग्मेटाइज करते हैं जो मैं करती हूँ, पर क्यों करते हो? लाइक अभी भी जैसे मितेन जो आए थे वो बता रहे थे कि लोग यू नो कचरा खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फालतू चीजों पे पैसा खर्च करेंगे, पर अगर से एक फिटनेस ट्रेनर तुम रख रहे हो, तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा है, पर तुम नहीं रखोगे क्योंकि तुमको लगता है करके यार पैसे क्यों बर्बाद करे, यार इसको क्यों करे. सो दैट इज, ये भी उनको भी सेम, मैं उनको बोल रहे थे, हम मेरा तो मैं पैसा भी नहीं लेती, फिर भी लोग फॉलो करने से इतने बार, और मुझे एक्चुअली ऐसा नोट बनाना पड़ा है, और कुछ लोग 2 बार रिमाइंडर देने के बाद भी दे विल नॉट फॉलो. They'll only praise you and go. I'm like, क्यों तुम लोग को, तुम आलतू फालतू लोगों को फॉलो करते हो जो मदद भी नहीं करते. Yes. And I think this issue is more common in India, I think, because most people are stigmatizing this mental health part. And they are thinking कि हाँ अब इतना माइंड को क्यों स्ट्रेस देना, कि इतना ज्ञान ऑलरेडी पढ़ाई से इतना ज्ञान मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा ये चीज से क्यों ये करना. तो थोड़ा सा वो वाला फैक्टर भी आता है. Right. But if somebody will realize that what you're giving, then they'll definitely, ma'am, appreciate you, follow you, and but yeah, it takes time, but yeah, it's. अभी जैसे त्रिश, डॉक्टर त्रिश जो है, she's good with, she's her specialty is porn addiction, but सारे गोरे उसको फॉलो करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता. They don't have this thing कि अरे और लोग क्या कहेंगे. ये लोग इतनी सी बात पे डर जाते हैं. हमारा जो कल्चरली हमारा जो माइंडसेट है, अच्छा स्टडी सिंग लोग, मैम आपने, अरे आप बोला, अरे अब मेरे जाने का टाइम है, फिर तो आता है, बट वेलकम, और अभी बाय भी बोलो मुझे क्योंकि काफी लेट हो गया है. योर व्यूज ऑन संदीप महेश्वर, अरे देवा परमेश्वरम, मेरे कोई व्यूज नहीं है, मुझे अकेला छोड़ो, मुझे कुछ नहीं लेना देना इस चीज से, मुझे कुछ नहीं कहना. मैम एंटरटेनमेंट एंड रियल टॉक, थैंक यू सो मच. हाँ, हम मेरा तो सारा, आई कीप स्विचिंग. इसके लिए एक माइंडसेट चाहिए जो मेरे पास, आई थिंक आई एम लकी इनफ टू हैव दैट आई कैन स्विच फ्रॉम दिस इमोशन इनटू दैट इमोशन. एंड प्लीज लेट्स नॉट गो इनटू द कंट्रोवर्सी ऑफ SM, प्रखर, श्वेता. अपने को क्या लेना देना यार, ठीक हो जाएगा सब. और मैंने अभी तक उसका वीडियो नहीं देखा. आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि अब क्या बोला होगा. तो या जस्ट होप दैट दिस जल्दी से खत्म हो जाना चाहिए. क्या फायदा है ऐसा सब कंट्रोवर्सी करके, कुछ किसी का भला नहीं हो रहा है इसमें मेरे हिसाब से. एटलीस्ट आई डोंट सी व्हाट इज द गुड कमिंग आउट ऑफ दिस. सो ओके बच्चा लोग, गॉट टू गो. आई थिंक वी क्रॉस द 3 hour मार्क. ऐसा लगता है जैसे हम लोगों ने हमको कोई गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड से ये आने वाला है चिट्ठी कि हमने ये किया. हम लोग इतना देर बैठते क्यों है मुझे भी नहीं मालूम. Once you sat for I think 5 hours. Yeah, I did. I when Sarad was here, yeah. It's really, ma'am, a lot of hard work, like, and a lot of like selfless work too. Thank you. Anyway, Study Sing, अपना ध्यान रखो. और I love the name that you kept for yourself, Study Sing. और that's very interesting क्योंकि it gives you good vibes कि तुम पढ़ाई में फोकस कर रहे हो. Hope so. And अपना ध्यान रखो बच्चा लोग. Any issues, contact me. Controversy में आज सबको आता है लेकिन दिखाता कोई नहीं क्या. हाँ, तो मैं कौन सा तुमको बोल रही हूँ करके मुझे नहीं देखना, मुझे देखना है, पर मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी.
स्टडी सिंग और 5 मिनट. अच्छा, मैं तुम्हें बोलती हूँ मैं क्यों नहीं बात करूंगी. ओके, सी, when we say something, okay, at this point it might seem that बिना सोचे समझे, सपोज आपने एक वीडियो देख ली, ठीक है, आप उसके साइड पे बात करोगे, फिर वो दूसरा इंसान कुछ निकालता है, फिर तुम उसकी बात करोगे, फिर इधर उधर इधर उधर. मतलब, do you understand that both can be right and both can be wrong? It's possible that we are not seeing uske the beneath the surface, what is there actually, what is happening, we don't know. तो हम बस मजा करने के लिए इनके बारे में बात कर लेते हैं, साइड ले लेते हैं, पर क्यों, कौन क्या कर रहा है, किस तरह से, उनको ही हैंडल करने दो. एंड वेरी ऑनेस्टली आई वुड नॉट वांट टू टेक साइड्स, बिकॉज आई डोंट थिंक एंड आई डोंट थिंक मेरी जो व्यूज है इतनी इंपॉर्टेंट. मैं कौन होती हूँ इनकी लाइफ में दखल देने के लिए. 1, 2, कितने लोग इस पे रिएक्शन वीडियोस बना रहे हैं, उनको शायद फॉलोअर्स चाहिए या सब्सक्राइबर्स चाहिए या व्यूइंग आवर्स चाहिए, या बस दे आर जस्ट इंटरेस्टेड इन गिविंग देयर 2 bits of whatever introspection that they do and they want to. But I'm Yes, not ma'am. like that. Yeah, it's not, your type of content creation is very different, ma'am, and even I think no viewer of yours like will want you to do such kind of thing, because that doesn't suit with your vibe, ma'am. It is very different kind of thing which you create, and it's like, it's nice the way you're going, ma'am, like staying away from such contradiction and all. Because this would be the easiest way for me to grow. I just have to do few videos. I Yeah. could be talking shit. Okay, I got to be giving the worst analysis of the And damn. ma'am, it all started when Prakhar gave his views on Shwetab's reaction. Then Right. after that, it all started. So just when we talk about But he things, had it's viewers simply already, so it's not like Yeah. he grew because of that. But I'm saying कि what he did, who did what, why they did it, अपने को क्या मालूम. इंसान के अंदर हम खुद को समझ में इतना टाइम लगता है, कहाँ टाइम है अपने को दूसरों को समझने के लिए. प्लस मैं जब भी बात करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ. अभी जैसे किसी ने बोला मेरा भाई मेरे पे स्पाई कर रहा है, तो मैं समझने की कोशिश करूँ कि लड़की को ऐसा क्यों फील हो रहा है, ये लड़का कर क्या रहा है और ये क्यों करता होगा. राइट, मेरा एरिया जो सोच का है, मैं हर इंसान के एंगल से सोचने की कोशिश करती हूँ. क्या मैं इसमें सफल होती हूँ वो मुझे नहीं पता, पर मेरा काम है. तो बिना जाने द 100% ट्रूथ जो आई थिंक एक इंसान को ही जान सकते हैं, हम कैसे किसी को बोल सकते हैं कौन सही कौन गलत. कोई बोलता है इसको ईगो इशू है, किसको बोलते इसको ईगो. यार ईगो तो सब में कहीं ना कहीं होती है. हम सबको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और फिर वो ओवर द टॉप कब चले जाते हैं हमको भी नहीं मालूम. और सब गलतियां करके सब सीख जाएंगे. मेरे मुझे अगर से चैनल में ये करना है, मुझे सिर्फ एक नया थंबनेल बनाना होगा, रचना टॉक्स अबाउट, फटाक से सबसे ज्यादा व्यूज मेरे चैनल पे उसी को आएंगे. क्योंकि हाँ, लोगों को मसाला चाहिए, पर मुझे वो नहीं देना है. आई डोंट वांट टू टॉक एंड टेक साइड्स, not because I'm playing safe. I just feel I don't know everything. Who am I to give my views on this? Who the hell gave me that right to interfere with people, on these kind of things? मैम क्या Zoom live कर रहा हूँ, मुझे मैम आपका आवाज आ रहा है और समझ नहीं क्या मैम, मैं Zoom live कर रहा हूँ, मुझे मैम का आवाज आ रहा है और समझ नहीं आ रहा. क्या मतलब 2 बार तुमको एको आ रहा है, तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो. तो कभी कभी होता है, अगर तो 2 जगह चलाते हो तो एको आता है. जैसे दैट टाइम आई डिड बाय मिस्टेक ऑन माय फोन एंड दैट, सो मेरा एको वॉइस आ रहा था. आई एम गेसिंग दैट्स व्हाट यू मीन, मुझे नहीं पता. सो या तो बात मत कीजिए. इट्स ओके. यस यस करेक्ट. अच्छा, 5 मिनट से ज्यादा हो गए. मैं जब तुम लोग को तो मालूम है, मैं जब बात कर स्टडी सिंग, दैट्स व्हाट यू मेंट राइट, कि एको आ रहा है. 2 मैम का आवाज आ रहा है और समझ नहीं आ रहा है. अच्छा कोई बात नहीं, रिप्लाई देने की जरूरत नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं. अच्छा अब मैं चलती हूँ. प्लीज 11:15 बज रहे रात के यहाँ पे. एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. गॉड ब्लेस यू ऑल. अगर से भगवान में बिलीव करते हो, नहीं बिलीव करते तो मेरी ब्लेसिंग्स, अगर से मेरी भी नहीं चाहिए तो खुश रहो एंड स्टे सेफ. लाइफ में हम लोग, माय प्लेजर. सो लाइफ में हम लोग गलतियां करेंगे, गलतियों से सीखो. आज जैसे एक डीएम आया था, बहुत निराश थे जिंदगी से अपनी गलतियों की वजह से, और he wanted to harm himself. Don't harm yourself. Learn to handle your stress in a better way. We'll make mistakes. Just learn from it, grow from it,
and say it's okay, we are all human beings. कोई ऐसा इंसान नहीं जो गलती नहीं करता, ठीक है. I know कुछ लोग बोलेंगे हम बहुत ये impossible that you will not make mistake. So it's okay and take care of yourself. जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे लोग, पढ़ाई पे भी ध्यान दो, अपने मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दो, फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान देना, और कोई इश्यूज है तो कांटेक्ट मी, ठीक है. आई एम एंडिंग द स्ट्रीम. टेक केयर.